था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, चवंदा आहिनि त ख़ुशी अंदर में हूंदी आहे, ख़ुशीअ खे अंदर खां ॻोल्हियो, पंहिंजी ज़ात उन सां तव्हां गुफ़्तगू कयो, ॻाल्हायो, ठीकु आहे, ॻाल्हायो, कचेरी कयो ऐं अहसासु ॾियारियो, अहवाल कयो त असां आहियूं, असांजी अहमियत ऐं हैसियत बि आहे। यादि रखिजो, जॾहिं अंदरि जो इंसानु ख़ुशि हूंदो आहे न त ॿियनि जे लाइ बि ख़ुशी जो बाहिस थींदो आहे। जो अंदर खां टुटल हूंदो आहे ऐं मुश्किलुनि में हूंदो आहे त हू ॿिए जे लाइ बि ओड़ो ख़ुशीअ जो बाहिस न बणिबो आहे। तंहिंजे करे हर शइ खे छॾे करे पंहिंजे लाइ तव्हां वक़्तु कढो, वक़्तु वक़्फ़ कयो, हर कमु छॾे, हर परेशानी खे छॾे, हर मुसीबत खे छॾे, हर इंसान आहे ईअं चवंदा आहिनि न को टाइम हुजे जंहिंमहिल तव्हां दिलि खे सुकून ॾियण लाइ का बि ड्रिंक, इलाही माण्हू आहिनि मेजॉरिटीअ में 75% माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त चांहियूं पियो, चांहि खां उनखे रिलैक्सेशन मिलंदी आहे। चांहि जो मॻो ठाहे पंहिंजो पाण खे, या इलाही जी हॉबी हूंदी आहे चांहि नथी वणे मूंखे बुक पढ़ण सां सुकून थो मिले, इलाही इहे चवंदा आहिनि मुंहिंजी दिलि चवंदी गैलरी में थधी हवा खाईंदे कुझु सोचां, हां ऐं इलाही अहिड़ा हूंदा आहिनि पंहिंजे बेड ते रिलैक्स थी के एक्सरसाइज़ कंदे रिलैक्स थींदा आहिनि, वर्कआउट कंदे ऐं इलाही अहिड़ा हूंदा आहिनि का शइ पंहिंजी पसंदि जी खाई करे दिलि खे ख़ुशी ॾींदा आहिनि इनर खे ऐं उन खां पोइ उहो ईअं चऊं था पंहिंजे मुंहुं वेही रहनि, सुकून वठनि ऐं ईअं सम्झो त पंहिंजो पाण खे हू मथां खां हेठि ताईं जाचनि, एनालाइज़ कनि ऐं पंहिंजो अंदरि खे झंझोड़नि, छा ग़लति कयो अथनि, छा सही कयो अथनि, कंहिंखे तकलीफ़ ॾिनी अथनि, कंहिंखां तकलीफ़ वरिती अथनि, पाण में कहिड़ो चेंज आणनि, ॿिए खे छा फ़ाइदो पहुचाए सघनि था, ॿियनि खे कीअं ख़ुशियूं ॾेई सघनि था ऐं मुश्किलुनि खां निकिरी करे पाण ॿियनि खे बि मुश्किलुनि मां कढी सघनि था। इहे उहे पॉइंट्स आहिनि जेके इंसान खे हिकिड़ो ईअं चऊं त अंदरि जी ख़ुशी ॾींदा आहिनि, सुकून ॾींदा आहिनि। तव्हां जेॾी महिल अंदरि खां सोचींदा आहियो न त यार मूंखे सुकून वठिणो आहे, सुम्ह ऐं दिलि जो इत्मीनान हुजे, ख़ुशीअ सां वेठा हुजूं, रिलैक्सेशन हुजे त सभिनि में पहिरीं पंहिंजे पाण खे एनालाइज़ कंदा कयो, सुबुह खां शाम ताईं तव्हां छा छा कयो, जे तव्हां खां का ग़लती थी आहे जंहिंजे करे तव्हांखे इरिटेशन पई थिए दिमाग़ में, छो कयमि, छो हीअं न कयां हा त सुठो कोन हो, हीअं न हुजे हा त वधीक बहितरीनु अमल कोन हो, न यार हीअ मूंखे न करणु खपे हा, जेको तव्हांखे को कमु कंदे डेॼारे लिकाइण ते मजबूर करे त कंहिंखे ख़बर न पए त यादि कजो इहा हिकिड़ी इंडिकेशन आहे जेकी अलाह जे तरफ़ां आहे, जेको चाहींदो आहे त तव्हां बुराई ॾांहुं न वञो, बुरो न कयो, बुरे जी तरफ़ जेको माइल पिया थो पासे ते स्टॉप लॻाए छॾियो पंहिंजो पाण खे। यादि रखिजो अगरि तव्हां इहे शयूं नोट न कंदव त लाइफ में हिकु अहिड़ो चेंज ईंदो जेको तव्हांखे बिल्कुलु उन पाणी वांगुरु वाहे खणी वेंदो जिते तव्हां सुकून जी ज़िंदगी जो त पंहिंजो पाण खे ख़तमु करे छॾींदो। छो जे अंदरि जी तसली, अंदरि जो सुकून इंसान खे न हूंदो ऐं ॿिए जो दुख ॿुधंदो न हूंदो, ॿुधण वारो न हूंदो, सिर्फ़ु ॿुधाइण वारो हूंदो ऐं पंहिंजो पाण खे हमेशह चवंदो आऊं मुंहिंजी ॿुधो, आऊं तकलीफ़ में, त यादि रखिजो उन तकलीफ़ लाहिण जो अमल बि पहिरियों इहो अथव त ॿिए खे रिलैक्स कयो, छो जो ॿिए जी रिलैक्सेशन तव्हांजी रिलैक्सेशन आहे, तव्हांजो पंहिंजो सुकून आहे। यादि रखो त नंढड़ी कंहिंजे कमु ईंदा आहियो त तव्हांजी दिलि खे केॾी ख़ुशी, पर उन में इहो हूंदो आहे
कंहिंखे कीअं ॿुधायां त मूं हीउ कमु कयो आहे, केॾी ख़ुशी मिले छो, पर अंदरि में हिकिड़ी उत्साह पैदा थींदो आहे, ख़ुशी हूंदी आहे, हिकिड़ो इंजॉयमेंट हूंदी आहे, सुकून हूंदो आहे, केॾो सुकून आहे, केॾो मज़ो आहे। हां तव्हां हुनजे कमु पिया अचो, तव्हां हुनजे कमु कयो आहे, उहो ख़ुशि थियो आहे, हुन तव्हांखे मुस्कुराए ॾिठो आहे, आउं तव्हांजे लाइ दुआऊं कंदसि। त इहे सभु शयूं आहिनि न। तव्हां कुझु माण्हू चवंदा आहिनि मुंहिंजी इज़त करे मुंहिंजी ज़ाल, या ज़ाल चवंदी आहे मुंहिंजो मुड़ुसु मुंहिंजी इज़त करे, या दोस्त चवंदा आहिनि यार मुंहिंजी इज़त हुजे, वॾो चवंदो आहे मुंहिंजी इज़त, बॉस चवंदो आहे मुंहिंजी इज़त हुजे। इहे हर जॻह ते कैटेगरीज़ आहिनि। वॾा चवंदा आहिनि ॿार असांजी इज़त कनि। यादि रखिजो गिव एंड टेक आहे। गिव एंड टेक ईअं इन सेंस में इज़त कराई वञिबी आहे, वरिती कोन वञिबी आहे। इज़त लाइ उहे हालात पैदा कबा आहिनि, उहे रवैया इख़्तियार कबा आहिनि, उहो तरीक़ेकार हूंदो आहे त तव्हां बसि मजबूर थी पवंदा आहिनि तव्हां सां मुहबत करण लाइ ऐं तव्हांखे इज़त ॾियण लाइ। इहे हिकिड़ी सोचण जहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि। सो यादि रखिजो त इन्हनि शयुनि खे पाण रियलाइज़ कयो, पाण सम्झो ऐं पाण उन्हनि ते अमल कयो। छो जो केर बि अची तव्हांखे सम्झाए सघे थो, ॿुधाए सघे थो, पर तव्हांजी मानी अॻियां रखबी त आहे, पर उहो गिराह ठाहे तव्हांखे पाण खाइणो बि आहे, गिड़कणो बि आहे, बल्कि उन खां पहिरीं चॿाइणो बि आहे। त इहे सभु कुझु तव्हांखे करिणो आहे। असांजो कमु हूंदो आहे, या ईअं चऊं पंहिंजे हिन चैनल जे तवसुत सां, हर लिहाज़ सां, त तव्हां ते इंफॉर्मेशन पहुचायूं। सो इंफॉर्मेशन इन सेंस में हूंदी आहे त उहा कंहिंजे दिलि में घर करे वञे। ऐं भला हू चवंदा आहिनि लख न हज़ार, हज़ार न त 10, 4, 2, केरु त सम्झंदो, असांजी बि ॻाल्हि ॿुधंदो। सो मुंहिंजी दोस्त तव्हांखे ख़बर आहे हमेशह वांगुरु साइमा इरफान काउंटर संभालींदी आहे जुमे जे ॾींहुं। अॼु बि ॾाढा ख़ूबसूरती सां प्लेटर सॼा पिया आहिनि। सो पहिरीं त सलाम कयूंसि ऐं अस्सलाम वालेकुम। तव्हां कम खे लॻा पिया, आउं जल्दबाज़ी ईअं ई थींदो आहे लाइव में, ईअं ई बाबा लाइव में ईअं ई आहे यार। पहिरीं त आउं चवंदसि मुंहिंजे कैमरामैन खे त हीउ प्लेटर ॾेखारे। क्या बात है साईं, तो त असांजो दिलि खटे वरितो छोकिरी। जबरदस्त जबरदस्त। मैं आपको इतनी खास और मजे की और आसान रेसिपी ये पराठे की, रात की जो दाल होती है, जो बचा हुआ कोई सा भी सालन है, आलू है, गोभी कोई भी, लेकिन ये है दाल के पराठे। इसको जो है रोटी बेली और उसके ऊपर दाल डाली और उसको कवर कर दिया और वो बना दिया। और ये इतना मजे का पराठा है ये वाला, ये सुगड़ माओ के काम ते बचल का भी शे घर जी तहां यूटिलाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल रिसाइकिल करें। और एक तो बचत है, पैसों की बचत है, और दूसरे ये कि टाइम की बचत है। और ये इतने मजे का पराठा यकीन करें जब घर में बनाएंगे तो इतना अच्छा लगेगा खाते हुए, बच्चे शौक से खाते हैं और लंच में भी लेके जाते हुए जो है उनको अच्छा लगेगा और बहुत टेस्टी बनता है। अच्छा आलू बॉईल जी जी आलू जो बोड़ या आलू जो बुड़तो ठाहींदा आहियूं साइमा, आलू का उहो थी वेंदो आहे। उन खां पोइ चांवर बचियल हूंदा आहिनि सुबुह जो, माऊं जेके आहिनि उनखे थूम जो तड़को ॾेई उनमें छा चवंदा आहिनि हाइड विझी, हल्दी जेके चवंदा आहियूं, हल्दी विझी करे उहा उन विझी भुञी ॾेई, पीले पीले कलर जा चांवर नंढा हूंदासीं, यादि आहे। ये सभु इहा इज़त या क़दर हूंदी शइ जी। हींअर त असांजो स्टेटस किरी थो पए, बचियल चांवर वरी उनखे ईअं भुञी खारायूं बर्गर। ओ नो, असां बर्गर घुराए छॾींदासीं। मैं क्या करती हूँ रात के बचे हुए चावलों का क्या करती हूँ, उनको यहाँ पीस के उनको अच्छी तरह से वो पानी में वो करके नथा के, उसके बाद मैं उसको क्या करती हूँ थोड़ी चीनी डाल के उसकी वो बना देती हूँ, जो है खीर बना देती हूँ। क्या बात। कभी खीर बना देती हूँ, कभी जो है उसमें वेजिटेबल ऐड करके तो उसको चाइनीज राइस बन जाते हैं और इतने कलरफुल बन जाते हैं। क्या और उसी तरह से मैंने ये रात का भुट्टा था, भुट्टा मैंने इतना इसमें लहसुन का तड़का दे के और उसका भुट्टे के अंदर डाल के थोड़ा सा इसमें वो डाले, मैंने टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, धनिया पुदीना डाला और वो रोटी को मैंने बेला, उसके ऊपर ये डाला, उसको कवर कर दिया और बिल्कुल जो है वो पेड़े की तरह बना के उसको बेल के उसको रख दिया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद जब ये पराठा बन जाता ना हल्की आंच पे, इतना क्रिस्पी खस्ता बनता है कि खाने वाला कहेगा कि भाई इससे बेहतर मैंने कभी पराठा खाया ही नहीं है, इतना टेस्टी बनता है। और ये वाली चीज़ जो है ये हमारे बचपन से हमारी अम्मा, हमारी नानी दादियाँ बना के हमें देती थी। और यकीन करें उस वक्त ना बाहर के बिस्किट खाए जाते, ना बाहर की चीज़ें खाई जाती थी, पैकेट वाली कोई चीज़ घर में नहीं आती थी, रवाज ही नहीं था उस वक्त। ये इतनी मज़े की चीज़ें जो हम भूल चुके हैं, ये चीज़ें बन के रखी हुई होती थी घर में। अब तो सिर्फ ये हो गई है कि कोई मखसूस टाइम आता है तो ये किए जाते हैं, अदरवाइज नहीं। अचानक मेहमान आ जाए, क्या होता है कि कुछ खाने के लिए इत्तेफाक से नहीं होता तो क्या करें, सुगर माओं का जैसे आपने कहा, सुगर माएँ क्या करती हैं
کہ پہلے زمانے بہت سگر خواتین تھی. آٹا سادہ آٹا لیا, تھوڑا سا اگر میدا ہے تو وہ ایڈ کر لیں. میں نے بھی 1 کپ میدا 1 کپ جو ہے آٹا لیا, اس میں گھی ڈال دیا. آئل سے اوائڈ کریں, گھی اس میں اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سافٹ کرتا ہے. تو وہ ڈال دیے, چینی ڈال دی, اور اس کے اندر تھوڑی سی میں نے وہ ڈال دی الائچی کا پاؤڈر ڈال دیا. اس کو گوندا, تھوڑا سا سخت گوندا, اور روٹی بیلی. اس کے اوپر جو ہے کپ ہے یا گلاس ہے, اس کو جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا. یا بچوں کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کر لیں کہ وہ بنا کے اور بچوں کو بولیں اس کے اوپر وہ کریں, اس کو پنچ کریں تاکہ وہ بالکل گول سی اس طرح کی جو ہے وہ فٹنر ہے نا, تو وہ چیزیں تو ٹچ لگتی ہیں جو بھائی عادت نہیں ہے, ڈرائیونگ کرتا ہوں تو وہ چیز آ ہی جاتی ہے جو چیز جس میں ماہر ہو. تو یہ اتنی مزے کی چیز ہے, آپ چکھ کے دیکھ سکتی ہیں سارا اگر آپ تھوڑا سا میں چکھوں گی. جی پتہ ہے میٹھا ہے, میٹھا بڑا جھوٹ بول رہی ہوں, اور میٹھا ہے بھائی. یہ لیجیے گا, جی کھا کے بیٹھی ہوئی, ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے مہمانوں کو بھی دے سکتی ہیں. میں ویسے ہی بتا دیتی آپ کو, لیکن بس وہ ایک اسٹائل مار رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ کھا رہی ہوں. یہ بہت زبردست ہوتا ہے بالکل. یہ تو وہی ہری چٹنی, پودینہ, دھنیا پودینہ, لہسن اور زیرہ اور دھنیا پودینہ, اور میں اس میں پیاز بھی ڈالتی ہوں اور ٹماٹر بھی ڈالتی ہوں اس چٹنی کے اندر. یہ چیز تو بڑی نئی چیز پتہ چلی جو مجھے نہیں پتا تھی. سو بہت زبردست, کبھی کبھی ہیلدی کھانا بھی. اور ہاں یہ دیکھیں لسی, جیسے اچانک مہمان آ جاتے ہیں, لائٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لائٹ نہیں ہے, اب ہم نے پلیٹر سجا کے لائی ہو تم یار. لائٹ نہیں ہے تو کیا کریں, یہ دیکھیں اپنے اسی شاپر میں جس میں دہی ہے اسی کو اچھی طرح سے میش کریں, اچھی طرح سے, تاکہ وہ بالکل وہ ہو جائے. یا فورک سے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر کے اور 1 گلاس پانی کے اندر جو ہے وہ کر دیں, اور یا دودھ کے اندر ڈال دیں. تو یہ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں. بالکل یہ اتنی آپ نے یہ دودھ کے اندر بنائی ہے ابھی؟ نہیں, وہ دونوں میں مکس, ایک دودھ والی اور ایک پانی والی. نہیں, دودھ اور پانی دونوں مکس ڈالیں. اچھا. ہاں, دہی, دودھ اور تھوڑا سا پانی. تو یہ اتنی مزیدار یہ بن جاتی لسی کہ آپ جب پیئیں گی تو آپ کو خود اندازہ ہوگا. یہ بھی آپ چکھ سکتی ہیں. اور اس میں نے کیا کیا ہے, یہ جو ہے پنچ سے تھوڑا سا زیادہ, کیونکہ زیرہ بھنا ہوا اتنا مزے کا لگتا ہے, کرنچی اتنا مزے کا لگتا ہے. میں وہ پودینہ بھی ڈال کے, منٹ بھی ڈال کے پیتی ہوں, بڑا مجھے واقعی انجوائے کرتا ہے. آپ یہ بھی ٹرائی کر سکتی ہیں. یہ میں بعد میں آرام سے ٹرائی کرتی ہوں, میٹھا میں نے چکھا ہوا ہے تو اس لیے وہ تھوڑا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. بہرحال جاتے جاتے تھینک یو سو مچ. پر ایک جملہ ضرور کہتی جاؤں گی جو میں نے ریئلائز کیا, کیونکہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول سے سیکھتے ہیں, ایٹماسفیئر سے سیکھتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بیٹھتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ, تو ان کی باتیں وہ چیز ذہن میں آتی ہے جو کام آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کا لیکچر سن رہے ہیں اور ایگزام میں بیٹھ گئے, آپ کا توجہ نہیں بھی ہے نہ چاہتے ہوئے, کیونکہ پرسنلی میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے, میرے ذہن سے میں اس لیکچر میں تھی, میں سن رہی تھی, اور اچانک میرے پاس وہ سوال آیا, تو وہ ساری جو ایکٹیویٹیز جو مجھے سر نے کرائی ہوئی تھی وہ میں نے ساری لکھ دی, اور میں نے اس پہ بہت زبردست مارکس لی, کیونکہ وہ میری اپنی اوپینینس تھی اس سوال کے حوالے سے. تو یہ سچ ہے, ریئلٹی جو ہے وہ ٹیچرز کو بھی پتہ چلتی ہے, اور وقت ہمیں بتاتا ہے, بالکل ایسے ہی سمجھاتا ہے کہ یہ جو وقت کو سمجھنا ہوتا ہے, وقت کے ساتھ لوگوں کو سمجھنا ہوتا ہے, واقعی وہ سمجھ آ جاتی ہے. بالکل پہلی بات اس بات پہ بھی کبھی میں کوئی اچھی سی بات پوچھوں گی بھی اپنے گیسٹ سے, اور خود بھی کروں گی. اچھا, جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک بات ہوئی جم کے حوالے سے. تو میں نے کہا نہیں, یہ اس بندے کو جم نہیں جوائن کرائیں گے, عادت پڑ جائے گی یہ وہ. تو ہمارے عمران نے کہا کہ نہیں میڈم میں بھی کرتا ہوں, پھر میں نے چھوڑی ہوئی, میں تو سیٹ ہوں. میں نے کہا نہیں یار, لیڈیز ہیں, پھر لیڈیز کا پھر میرج کے بعد جو ہے وہ کر سکے. اچانک میرے دماغ میں میرج کر سکتی ہے, نہیں مجھے سائمہ آ گئی. سائمہ بھی تو میرڈ ہے, سائمہ کے بھی تو بچے ہیں, سائمہ بھی تو سارا کر لیتی ہے مینج, تو مطلب ہر عورت کر سکتی ہے. بالکل, یعنی کہ جو ہمارا مورال جو ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی اپ ہو جاتا ہے آپ کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے. بالکل. سو بہرحال یہ تھینک یو اسپیشلی آپ کے لیے, تھینک یو سو, کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ چیز میرے دماغ میں کلک ہوئی, ادروائز ہو سکتا نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ملٹی ٹیلنٹڈ بنایا ہے, ہر کام جو وہ کرنا چاہتی کر سکتی ہے اپنی باؤنڈری میں رہتے ہوئے. اور آخری میں ایک چیز سوری بتا دوں, اس میں نے تھوڑا سا چینی بھی ڈالی تھی اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالا, تاکہ وہ دیکھنے والے کہیں اس وقت بتا دیں. بس صحیح ہے. سو عام تاکہ بدائیں الا ت اساں وٹ اسانی موٹیویشنل اسپیکر ٹاپک تاکہ ونی ہوتے وہی بدائندس, پر ہنجر آؤں تاکہ انہن سان ملائے بچھڑیاں ت ارم ضیاب اسان موجود ہیں, ऐं नात ख़्वां जेको आहे हमद ख़्वां नात ख़्वां पंहिंजो महमूद भाई बि असां सां गॾु आहिनि, त उन्हनि खे बि थी वेलकम कयां. अस्सलाम वालेकुम. मिली ले जवाब ज़बरदस्त. ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां इरम जो त असां ॾाढा परेशान हुआसीं. तव्हांखे ख़बर आहे त
पंहिंजो असांजो जेको मोटिवेशनल स्पीकर हो उहो असां सां गॾु हूंदो आहे हमेशह, पर उनजो ट्रेवल एतिरो हूंदो आहे त उनजे करे आउं डिस्टर्ब रहंदी हुअसि। जॾहिं खां अलाह साईं हिननि जी सूरत में मूंखे इरम अची वई आहे त आउं रिलैक्स आहियां ऐं मुंहिंजी ईअं सम्झो त रियल दोस्त भेण अहिड़ा रिश्ता थी विया आहिनि कुझु ई अरसे में, हिकिड़े 4-8 प्रोग्राम करण सां जो ईअं लॻंदो आहे त असां सालनि खां था सुञाणूं, छो जो कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जिन सां दिलि वरंदी आहे त उन्हनि सां कनेक्शन हुजणु लाज़िम आहे, दिलि ख़ुशि थी रहे। सो बढ़िया है। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए टाइम निकालती हैं। इतने यूँ कह के बिजी अपना शेड्यूल जो आपका होता है उसमें से निकालना बड़ी बात होता है। थैंक यू सो मच सायरा कि आप इतनी मोहब्बत से बुलाती हैं और हर दफ़ा इतना अच्छा वेलकम देती हैं कि यू मेड माय डे ऑनेस्टली। और क्योंकि आज का टॉपिक भी हम कुछ इंसानी अना और ईगो पे बात करेंगे, तो जो आपने बताया ना कि 6-8 प्रोग्राम्स में हमारी कितनी बॉन्डिंग बन गई कि हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह, बहनों की तरह हो गए, उसकी वजह ये है कि ना आपने अना के वो बुत तराशे, ना मैंने वो अना के बुत तराशे। तो जब हमारे दरमियान वो अना के बुत नहीं बने तो हमारी ये बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई। सही। तो आज का टॉपिक भी हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत है कि जब रिश्ता बनाओ तो अना को कहीं सुला दो। मतलब मेरी अना मेरी दुश्मन, यानी कि मेरी मैं, तो वो जो मैं आता है ना, बस मैं जॾहिं अची वियो न त तव्हां ख़तमु आहियो, तव्हां पोइ कुझु बि कोन्हे हो, छो जो तव्हां हुन खां डायरेक्ट पिया चओ था आऊं पसंदि कोन्हे अलाह खे निबरत ऐं झुकाव पसंदि आहे। सो ॻाल्हाईंदासीं असां हिननि खां त उन मौज़ू ते ॻाल्हायूं। अब देखो ना, अब मैं से ही शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग ना इस मैं को समझ नहीं पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर अना बुरी है, अगर मैं बुरे हैं, खुद को पसंद करना बुरा है, तो खुद ही को क्यों इतना पसंद किया गया? अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईगो, अना एंड खुदी, क्योंकि नुक्ता ये है, बड़ा बारीक सा फ़र्क है। लेकिन आज सारे व्यूवर्स को समझना चाहिए कि जो खुदी है दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जैक्ट। और अना जो है वो खुद पसंदी है, सिर्फ अपने आप को चाहना, अपने आप को समझना, ये सोचना कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरा ही कमाल है। अब दुनिया मुझे पूजे, दुनिया मुझे चाहे। फिरौन ने क्या किया था? फिरौन कहता था मैं खुदा हूँ। शैतान और रजीम ने, इब्लीस ने क्या कहा कि मैं क्यों सजदा करूँ, क्योंकि मैं आदम से बेहतर हूँ। मैं तो सिर्फ मेरे रब के लिए कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ और वो है और सारी दुनिया उसकी मोहताज है। यूं कहेंगे इस मैं ने उसे शैतान बना दिया। बिल्कुल, इब्लीस को शैतान और रजीम बना दिया। अब जो खुदी है ना, देखो खुदी जो है वो दर हकीकत मैं को ख़त्म करके पैदा होती है। जब तक आप इस मैं को अपने अंदर से ख़त्म नहीं करते, आपके अंदर खुदी पैदा नहीं होती, क्योंकि जब आप खुदी पैदा करते हैं और मैं को ख़त्म करते हैं तो दर हकीकत आप उस मैं को पहचानते हैं और अल्लाह से आपका रास्ता इस्तवार होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कितने खूबसूरत शेर में कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, कि अपने आप को इतना बुलंद करो, अल्लाह के इतने नज़दीक करो, अल्लाह के बंदों के लिए कुछ ऐसे बनो कि अल्लाह की नज़र में तुम इस तरह बन जाओ कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और यकीन मानो ये वो बंदे हैं कि हम समझते हैं कि खुदी को कि हर तकबीर से पहले कि बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, दौलत होती है, वो समझते हैं हम बहुत बड़े, इधर कहेंगे तो ये हो जाएगा, इधर कहेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन ज़मीन पर बैठने वाले कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि अगर वो कसम उठा लेना तो अल्लाह उनकी कसम पूरी किए बगैर नहीं रहता। ये वो ताल्लुक़ है, ये उस खुद परस्ती की नफ़ी है कि जिसके बाद आप खुदी को पैदा करते हैं। और देखो, शेख सादी से किसी ने सवाल पूछा कि बल्कि शेख सादी ने पूछा कि हिकमत क्या है, तो उसने कहा कि किसी भी अच्छाई और बुराई का फ़र्क। तो उनका नहीं, ये तो एक बहुत सतही सा जवाब है। तो उनका आप बयान करें हिकमत क्या है। अब ज़रा गौर से सुनना, तो उन्होंने कहा हिकमत है 2 अच्छाइयों और 2 बुराइयों के दरमियान का फ़र्क, कि मीठा। अब अभी साइमा के साथ आप खड़ी थी, मीठा कौन सा मीठा, शहद की तरह मीठा या गुड़ की तरह मीठा? वाह।
या फिर शक्कर जैसा मीठा, वाह वाह, तीनों मीठे अलग हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली फ़हम, फरासत यही है कि आप उस चीज़ का फ़र्क कर सके। तो दो अच्छाइयों का फ़र्क और फिर दो बुराइयों का फ़र्क, ये आपको पता होना चाहिए। और अना तो देखो सिर्फ बर्बादी है, क्योंकि जब आप अना परस्त हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो वो आपको स्लोली और ग्रेजुअली तकब्बुर की तरफ ले जाता है। और तकब्बुर अल्लाह की नज़र में बदतरीन गुनाह है। क्यों? कि तकब्बुर इस दुनिया से बनने का भी पहले का गुनाह है। इब्लीस से ज़्यादा नमाजें किसने पढ़ी? इल्म किसको था? मौल्लिमुल मलाइक था। गुनाह कौन सा किया? तकब्बुर का। वाह। तो माल का तकब्बुर, लोगों को सेहत का तकब्बुर होता है, अपनी बड़ाई का तकब्बुर होता है। बदतरीन तकब्बुर है इल्म का तकब्बुर, कि आप अपने इल्म पे तकब्बुर करें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसने तकब्बुर किया, अना थी ना, मैं बहुत थी कि मैं हूँ। तो मुझे एक वाक़या पढ़ के इतना मतलब उस वक्त मैं सोचती हूँ कि इब्लीस का स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा कि जब फरिश्तों में एक गहमा गहमी थी कि जन्नत से कोई निकाला जाएगा, और वो जिब्राइल अमीन के पास पहुंचे कि हम सुन रहे हैं कि जन्नत से कोई निकाला जाएगा। जिब्राइल अमीन ने फरमाया मैंने भी ये सुना है कि जन्नत से कोई निकाला जाएगा, चलो इब्लीस के पास चलते हैं। जिब्राइल अमीन के साथ फरिश्ते इब्लीस के पास हैं। अब इब्लीस की मैं का हाल देखो, कह रहे हाँ यही सुनने में है, यही कुछ है कि जन्नत से कोई निकाला जाएगा, तो तुम सब अपनी अपनी अल्लाह के हुजूर इबादतों को बढ़ा दो। वाह। उसमें उसने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा कि ये मैं भी हो सकता हूँ। He was giving advice to others कि तुम ये बढ़ा दो, because he thought that I am in a safe एग्जैक्टली ocean of water। यही गलती है। जिसे बोल के सब नबियों से कोई ना कोई गलती हुई है सिवाय हमारे आखिरी सरकार नबी के। अलैहिस्सलाम, मतलब नबी तो देखो बेसिकली मासूम है, बिल्कुल ठीक है, नबी मासूम ही पैदा होता है और उनकी कौम उनके साथ बेशक। वो बुरा करती थी। ये एक अलग टॉपिक है, हम उस पर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अना इंसान को ख़त्म कर देती है, अना इंसान को तोड़ देती है, अना इंसान को लोगों के दरमियान खड़ा नहीं रह देती। लोग अना परस्त शख्स से स्लोली और ग्रेजुअली दूर होने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा अनलकी शख्स वही होता है जिसे पता हो कि मेरी किस आदत की वजह से लोग मुझसे दूर हो रहे हैं और वो उस आदत को ना बदले। अच्छा इरम, बेजा में जो बढ़ जाती है वो कहाँ से पॉइंट शुरू होती है कि बेजा में आ जाती है, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो ना सायरा, जब अब माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें एक मुकाम दिया, तुम एक जगह बैठ के पाकिस्तान को एड्रेस करती हो, ठीक है, सायरा एक ही है। अब अगर तुम ये सोचो कि ये कुर्सी मेरी, ये मेरा मुकाम, सुबह मुझे हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, वो मेरा इंतज़ार करते हैं, वो मेरी बात से मुतासिर होते हैं, वो मेरे लिबास से मुतासिर होते हैं। अब वहाँ तुम्हारे अंदर ये एक स्लोली और ग्रेजुअली मुझे में से शुरू होता है, फिर मैं पे आ जाता है, कॉम्प्लेक्स शुरू होगा। अब ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अगर हम साइकोलॉजिकली इसे देखें तो दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अपने आप को जितना सुपीरियर समझता है वो उतना ही इन्फीरियर होता है। क्योंकि अब मैंने भी ये समझ लिया कि जी मैं आके एक शो पे बैठती हूँ तो ये मेरा कमाल, क्योंकि मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बोलने का तरीका आता है, क्योंकि मेरे पास अल्फाज हैं। अब इसमें सब ये मैं आ रहा है कि मैं बोलती हूँ, मेरे पास अल्फाज हैं, मुझे तरीका आता है, मुझे पहनना आता है, मुझे गुफ्तगू करनी आती है। मेरी क्या औकात? अगर मेरे अंदर खुद ही होगी तो मैं बोलूँगी कि मुझे बोलने की नेमत अल्लाह ने दी, बेशक, मुझे ये मुकाम मेरे रब ने दिया, बेशक, मुझ पे ये करम मेरे रब का है कि मैं इतने लाखों लोगों में, करोड़ों लोगों में मेरे रब ने मुझे चुना कि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के उसके बंदों से कोई अच्छी बात कह सकूं। तो जब हम ये सोच लें कि मुझे उसने चुना, मुझे उसने दिया, ये जहन उसकी अता, ये चेहरा उसकी अता, ये इल्म उसकी अता, तो मेरा क्या बचा? और आगे आपकी कोई ऐसी बात कह जाता है या आप किसी सोशल मीडिया पे पढ़ते हो, वो भी इंडिकेट होता है अल्लाह की तरफ से कि तुम सुधर जाओ या तुम समझ जाओ। कुरान की एक आयत का मफहूम है बड़ा सीधा सूरह बकरा में
کہ تم پہ جو پریشانیاں مصیبتیں فکریں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے, ہم نہیں لاتے, یہ تو تم خود اپنے لیے گھڑے کھودتے ہو. اور تم دیکھو آج ہم یہ کرتے ہیں, ایون اف ویل ٹیک ایگزامپل آف سم ٹائم, بڑی ہنسی کی بات ہے بٹ سم ٹائم آئی کالڈ اٹ دجال آنیسٹلی. ایگزیکٹلی, کیونکہ بالکل ہم اس میں جتنا اور ہمارے بچے انڈلج ہوتے جا رہے ہیں, Exactly. اللہ تو نہیں کہہ رہا, بے شک اللہ تو کہہ رہے 5 وقت ہو رہے ہیں, نماز پڑھو, پڑھو, نیکی کرو, بالکل کسی کا خیال رکھو, اور وقت ضائع نہ کرو کہ وقت سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے. اس کے لیے سوال ہوگا, وقت تمہیں نہیں پہچانے گا. بالکل. اور دوسرا یہ کہ نماز نہ پڑھو تو آپ خود نوٹ کرتی ہیں کہ آپ کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے, بے سکونی سی ہوتی ہے, آپ ریلیکس نہیں ہوتے, کام تو ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. جب تک اندر کا سکون اینالائزنگ نہ ہو اپنی, کام نہیں ہوتا. اچھا جیسے ابھی آپ نے کہا اچھا اور برا, 2 پوائنٹس. بلیو می ارم, صرف ویورز کو سمجھانے کے لیے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں, تو اسی لیے بھی شاید اللہ کی طرف سے کرم کوئی کیا ہوا ہے مجھ پہ کہ ابھی تک میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور آگے بھی اللہ ہی میری مدد فرمائے. لیکن یہ والی بات سچ ہے, آپ نے یہ جو جیسے کہا کہ میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی کہ میں جب گاڑی میں جا رہی تھی تو مجھے پتا چلتا, میں اپنے دھیان میں ہوں, مجھے پتا چلتا ہے کہ میں بات کر رہی ہوں, کیونکہ آپ کے اللہ کے سوا وہ بات اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں, اب یہ ہوگا میں اللہ سے بات کرتی ہوں, اللہ تو میری سن لیتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک تکبر ہے لیکن اپنے رب پہ ہے. اگر اسی طرح سے ہم یوں کہیں کہ کچھ غلط وے لے لیں, یا اسی میں کہہ دیں یار میں بات کرتی ہوں, میں اس کے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی چیز ایک مان, اب دونوں چیزیں ہیں تو وہ یوں, لیکن اس میں بچپنا ہے, لیکن بات دونوں وہی ہے, مان ہے. کیونکہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت علی مولا علی نے کیا فرمایا کہ جب تم یہ چاہو کہ تم اللہ سے بات کرو تو تم نماز پڑھو, اور جب تم چاہو کہ اللہ تم سے گفتگو کرے تو تم قرآن پڑھو. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہیں, ہمیں ہمارے رب پہ مان ہے, اور ہم کو ہمارے رب پہ مان ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہے, ہم کچھ نہیں ہے سائرہ, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ میں جو چاہتی ہوں وہ رب پورا کر دیتا ہے, تو یہ بھی غلط نہیں ہے, کیونکہ وہ میں سوچوں. ہاں اس کا بیان غلط ہے, کیونکہ دیکھو جب تمہارا کہیں پہ بھی مان ہوتا ہے, چاہے تمہارا ہسبینڈ ہو, چاہے تمہاری اولاد ہو, تمہارا رب ہو, تمہیں اسے دنیا کو نہیں بتانا, کیونکہ دنیا جو ہے وہ اچھائی نہیں پیدا کرے گی, وہ اس چیز سے حسد شروع کر دے گی جس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ حاسدین کو اپنے نزدیک نہ لائیں. تو آپ سرکار علیہ السلام کی بھی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تک تمہارے کام پائے تکمیل تک نہ پہنچ جائیں, تم لوگوں سے اس کا چرچا مت کرو, اس کی گفتگو لوگوں سے مت کرو. اور ابھی تم نے جو بات کی نا, تو بیکاز آئی یوز ٹو بی اے ڈبیٹر, اور الحمدللہ میں کہتی ہوں اس کی اتنی کرم نوازی تھی کہ آل سندھ, آل پاکستان جس کمپٹیشن میں جاتی تھی تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جی ارم وارث ہے, اب فرسٹ پرائز کا نمبر. مجھے ایک لڑکی نے پوچھا کہ تم ہمیشہ اپنی ڈبیٹ کرنے کے بعد بھی کسی کی نہیں سنتی, اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ تم آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ لی ہوتی ہو. تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتی ہوں. تو انہوں نے کہا دعا کرتی ہوں کیا مطلب؟ میں نے کہا میں اپنے جیتنے کے لیے دعا کرتی ہوں. جب میں اپنا کام کر چکی ہوتی ہوں, میری اسپیچ ہو جاتی ہے یا ڈبیٹ ہو جاتی ہے, تو پھر میں اللہ سے اپنے لیے دعا کرتی ہوں. تو اس لڑکی نے مجھے کہا کیوں, کیا صرف اللہ تمہارا ہے, ہمارا نہیں ہے؟ اب دیٹ لائک ٹائم آئی واز اسٹنڈ اینڈ کوائٹ. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتا لیکن میرا تو ہے. میں اس طریقے سے بات کرتا ہوں, تمہارا بھی اللہ ہے, تم بھی بات کرو. مطلب ایک یہ ہوا, میں کہا مجھے نہیں پتا لیکن میرا تو ہے. اور واقعی میرا یہ ہمیشہ رہا کہ میں کہتی ہوں, جیسے میں نے اس دن درود شریف کا بتایا تھا نا, ایسے ہی دعا, اللہ سے گفتگو کرتی رہو, اللہ سے دعا مانگتی رہو. رات کے جس پہر آنکھ کھل جائے سائرہ, اللہ سے دعا مانگو, اپنے آپ کی نفی کرنا شروع کر دو ذات کے آگے. کوئی تکلیف آئے بولو ہمارا کوئی غلطی ہے, ہمارا کوئی گناہ ہے جو ہمارے آگے ہے, جو میں نہیں جانتا. اچھا ابھی یہاں آپ نے بات کری, میں نے اسی سے پوائنٹ لی. میرا تو اللہ ہے, میں تو اللہ سے مانگتی ہوں, میں تو اللہ پہ ناز بھی کرتی ہوں, نخرہ بھی کرتی ہوں. میں کہہ رہی ہوں, میں تکبر کرتی ہوں اپنے رب پر, میرا اتنا ناز ہے, کیونکہ میں نہیں کہتی ناز واز سے چڑھی ہوئی چیزیں. جب تکبر لفظ لانا ہے نا, نیگیٹیوٹی, اس کو پوزیٹیوٹی میں پرسنل اپنا کہہ رہی ہوں. تو اس وقت جو میرا یہ کہ میں رب پہ تکبر کرتی ہوں کہ اللہ میرا ہے, اللہ نے ہمیں ایز اے مسلمان پیدا کیا ہے. تو یہ جو وہاں والی میں ہے نا, اصل میں ہونی یہ چاہیے کہ میرا ہے وہ, میں اس کو پہچان. تکبر بھی دیکھو اسی کی ذات سے جڑا ہوا ہے, اس کا رحم
उसका करम, उसका मुकाम, उसकी बुजुर्गी, उसकी दोस्ती, उसकी हिफाजत, उसकी चाहत अपने बंदों के लिए, ये सारा कुछ उसका है। उसी का है, हमें सब अब वो समझने जब की कहते हैं ना कि मैं तुम्हारा खालिक, मैं तुम्हारा मालिक। अब यार मैं, तुमने यहाँ एक बात की, मैं तुम्हें सूरह आदियात की एक छोटी सी आयत का मफहूम बताती हूँ। अल्लाह मियां ने ना बड़ी खूबसूरत सूरह कुरान की, हर सूरह बहुत खूबसूरत है, घोड़ों की मिसाल दी कि ये रात को बस्तियों में घुस जाते हैं, वाह, ये चिंगारते हैं, इनके खुरों से आग निकलती है, ये बस्तियों को उजाड़ देते हैं, ये जंग के मैदानों में घुस जाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे ताबे हैं, तुम चला रहे हो ना इनको, क्योंकि ये तुम्हारे ताबे हैं, तुम इनको सिर्फ सहलाते हो और खिलाते हो, तुम इनके खालिक नहीं हो, तुम इनके सिर्फ मालिक हो, लेकिन ये तुम्हारे ताबे हैं। सारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो खालिक भी है, मालिक भी है, वाह, खिला भी रहा है, इज्जत भी दे रहा है, सुभान अल्लाह, पिला भी रहा है, मुकाम भी दे रहा है, और मालिक के साथ साथ खालिक भी है। तो सोचो हमारी बंदगी की क्या इंतहा होनी चाहिए क्या कि सर तो झुकता ही है, सर के साथ जब तक दिल ना झुके तो यकीन मानो वो किसी झुकना काम का झुकना नहीं होता। नहीं, अमल का दारोमदार नियत पे, नियतों पर वही अव्वल, वही आखिर, वही कहार, वही जब्बार, वही रहीम, वही करीम, वही रहमान, वही रहमतुल आलमीन। तो यानी कि सारे नामों में अब अल्लाह तो वो रब्बुल जो करम आलमीन, कर, हाँ, वो और अब करम जब करता है। महीना भी शुरू होने वाला है, हाँ। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन, हाँ, वो देखो ना, रब्बुल आलमीन, वो रहमतुल आलमीन। बेशक। अब ये जो रास्ता है ना, बड़ी प्यारी बात है कि अगर रब्बुल आलमीन तक पहुंचना है ना, तो रहमतुल आलमीन की पैरवी तुम पे वाजिब है। वाजिब हो गई, तुम वाजिब हो पहुंच ही नहीं सकते रब्बुल आलमीन तक जब तक रहमतुल आलमीन की पैरवी नहीं करोगे। जबरदस्त। और वो पैरवी भी कैसे होगी कि जब तुम अपने आप को दुनिया के लोगों के लिए वक्फ कर दो, जब तुम सोचो कि अल्लाह ने मुझे इतनी नेमत दी, बेशक, अब मैं इसका चर्चा करूं, चर्चा करूं। मुझे ये नेमत दी, अब मैं किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद बन जाऊं, क्योंकि जो अल्लाह के बंदों के लिए फ़ायदेमंद बन जाता है उसे अल्लाह का रंग लग जाता है, वाह, और अल्लाह के रंग से बेहतरीन रंग कोई रंग नहीं, कोई रंग और ही पक्का नहीं रंग होता, भी वही कोई रंग। नहीं होता। इन ॻाल्हि ते मूंखे हिकु जेको आहे आउं कोट कंदसि, बतायो फ़क़ीर, बतायो फ़क़ीर हिकिड़ी टीम खे वठी करे पाणीअ में पिए विया, विच दरिया में कश्ती ॿुॾण लॻी, उन सभु माण्हू वेठा, उन्हनि खे चई त जल्दी कयो, बताए फ़क़ीर जी तस्बीह शुरू करे छॾियो, पढ़ो बतायो फ़क़ीर, बतायो फ़क़ीर, हाणे सभु पढ़नि पिया। अच्छा, उन्हनि मां हिकिड़े स्टूडेंट निहारियो त बतायो फ़क़ीर, असांखे त चए थो त बतायो फ़क़ीर पढ़ो, पर पाण पढ़े पियो अल्लाह 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 अल्लाह। जी ॻाल्हि ॿुध, असां पढ़ूं बतायो, पाण डायरेक्ट अल्लाह खां पियो लू लॻाए, असांखे पाण खां पियो लॻाए। छा कयो उन्हनि चयो, बाबा पाण बि था पढ़ूं अल्लाह अल्लाह, ही छा जे लाइ पढ़ूं? हाणे जॾहिं हुन अल्लाह चई छॾियो अल्लाह पढ़ूं था, त हुननि अल्लाह पढ़ी, कश्ती ॿुॾण लॻी, त बतायो फ़क़ीर चौंकिजी वियो ऐं चई छा पिया पढ़ो? हाणे तव्हां इन लफ़्ज़नि में थोरो गौर कयो, हुन अल्लाह जो नालो पढ़ियो त कश्ती ॿुॾणु न खपे हा, कश्ती ॿुॾण लॻी, हुन बतायो फ़क़ीर छो चयो, ऐं हुन इहो लफ़्ज़ छो ॻाल्हायो त छा पिया पढ़ो, मतिलबु ही सम्झण जूं पॉइंट्स आहिनि जेके सम्झनि। त हुन चयो असां साईं तव्हां पढ़ो पिया अल्लाह, असां पढ़ूं बतायो छो? त चई हुनखे, चई बाबा पोइ तव्हां वताए ताईं कोन हलायो अल्लाह सां, सो असां नबीअ जो फरमान त सम्झूं, अल्लाह असांखे पोइ सम्झ में ईंदो न, जॾहिं असां पंहिंजे नबीअ जी जेको आहे सीरत ते ॻाल्हाईंदासीं, उनजी सीरत सम्झंदासीं, उन्हनि जा वाक़ियात पढ़ंदासीं, उन सां लू लॻाईंदासीं, 5 वक़्त जी नमाज़ पढ़ंदासीं, तॾहिं त रब जे क़रीब थींदासीं, तॾहिं त अल्लाह असांजी ॿुधंदो, तॾहिं त सम्झो। हाणे डायरेक्ट अगरि असां पंहिंजो हिकिड़े खे डबल क्रॉस करे वञणु, त अल्लाह खे त डबल क्रॉसिंग वणे ई नथी, उन में बि त अची थो वञे न में पे जब बात चल रही थी, एक चीज़ और भी होती है रम, घर के माहौल से आप जो देखते हैं, अब मुझे पता है मेरे अब्बू मुझे कह रहे बेटा कहते ना मैं नहीं हूँ घर पे, अब बच्चा बचपन में तो कहता है अब्बू कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ, लेकिन जब बड़ा होता है, अच्छा उस वक्त हमें ऐसी आ रही थी, गाली दे रहा है, कितने प्यारे अंदाज से कह रहा है, अच्छा कह दिया कितने मजे देखा कि मैं मेरे बाबा गिरे घर पे, आप उसका मजा ले रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं आप उनकी ग्रूमिंग कर रहे हैं, वो सीख रहा है, फिर वो उनमें मैं ये नहीं कर सकता बेटा मैं ऐसा हूँ, मैं भी मैं वो बढ़ते 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 फिर आगे। आजकल तो टीचर्स डरते हैं पेरेंट्स से, जो कहते हैं कि हमारे बच्चों को, हाँ
गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी मारने की, बच्चे को आपको मारना नहीं, प्यार से समझाना है। आज ये मैं बहुत कोट करूँगी कि कुछ स्कूलों की हम लोगों तक शिकायत आई है, इससे पहले स्पेशली प्राइवेट, कि आप बच्चों को मारे नहीं। बच्चा अगर आपको इग्नोर कर रहा है तो वो टीचर खुद में गलती ढूंढे कि वो उस बच्चा उससे दूर क्यों हो रहा है। और बच्चा अगर स्कूल नहीं आ रहा तो ये चीज़ भी नोट करें कि उसकी ज़हनी मेंटली जो कंडीशन है वो कितनी बुरी होगी कि वो डर रहा है स्कूल जाने से, टीचर से बात करने से, कि वो उनको वो क्यों कहें कि हरास करती है, टेंशन देती है, डराती है, खौफजदा करती है। तो प्लीज़ इसका मत करें। इस पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कानून जो पास किया गया है जिसके लिए आपके लिए भी परेशानी होगी, तो आप यूँ ना करें। तो मकसद ये कि अब वो जो हो गया है तो वो जो बच्चा है, अब ये चीज़ एक बात होगी, आप ही की दो बातों को मैं कोट करती हुई चलूँ कि एक ये वो हो गई वो पॉइंट। एक हो गई कि बच्चे को पेरेंट्स सिखा रहे, तुम मेरे बेटे हो, वीगो से उतरते हो, तुम्हारे जेब में हज़ारों के नोट और कार्ड अलग से होता है, तुम यूँ जाना, तो तुम स्कूल क्यों भेज रहे हो? वो टीचर पे डोमिनेशन दिखाता है, तो उसकी तरबियत तो नहीं होती, उसमें तो मैं आ गई। वो क्या है? आपने देखो बच्चे को तबाह कर दिया ना। अब हमारे पास बहुत सारे बड़ी माजरत के साथ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पे पैसा यूं टपकता हुआ दिखता है। हाँ, ठीक है, और वो अपने बच्चों को बाकी बच्चों से कुछ एलियंस की तरह अलग बना रहे हैं कि जी हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ने वाला बच्चा जो है, वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट, वी आर गिविंग दिस नॉलेज, वी आर गिविंग दैट नॉलेज। अब वो स्टेटस सिंबल चीज़ें बनती जा रही हैं। माँ बाप लाखों में फीसें दे रहे हैं कि जी हमारा बच्चा तो, अब ये भी देखो प्राइड है ना जी, मेरा बच्चा तो इस स्कूल में जाता है, उसकी इतनी फीस है। अब तुमने बचपन से बच्चे को ये बताया कि बेटा तुम्हारे घर में ये 4 नौकर हैं, तुमने इनसे तमीज़दारी से बात नहीं करनी क्योंकि ये तुम्हारे ताबे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे नौकर हैं। तुमने किसी गरीब को मुंह नहीं लगाना क्योंकि तुम इनसे बहुत अलग हो, तुम तो हमारी औलाद हो। अच्छा, इधर बच्चे के मुंह से कोई बात निकली, मंगाओ यार, मेरे बेटे ने मांगा है, क्या मसला। अब स्लोली और ग्रेजुअली आपने उस बच्चे को इतना पॉइजन कर दिया, वो तो मासूम है ना। देखो आपने उसको पैदाइशी अनापरस बना दिया। एक ब्लैंक स्लेट है, एक ब्लैंक स्लेट है, बोर्ड है जिसके ऊपर आप अपने बच्चे के लिख रहे हो। तो बड़ी सोच समझ के लिखना है सायरा, क्योंकि आगे जब उसने इस माशरे का फर्द बनना है ना, फिर आप अपनी ही लिखाई हुई चीजों का शिकार खुद बनोगे, क्योंकि आप उसे जिस तरह बड़ा कर दोगे तो एक वक्त आएगा कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो वो सोचेगा मुझे क्या करना है इसका। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दरख्त की जिस शाख के पत्ते कम हो जाते हैं या फिर फल नहीं देते, लोग उसे अक्सर दरख्त से कटवा देते हैं, कहते हैं तो सूखी शाख हो गई है। फिर वो अपने माँ बाप के साथ भी ये करते हैं कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, अब तो पैसा भी इनका हमारा आ गया, ठीक है, रुतबा भी इनका हमको मिल गया, अब इनकी क्या जरूरत है। तो वो स्लोली और ग्रेजुअली उनको अपने से दूर करते हैं। दैट इज द टाइम मे बी जब वो ये रियलाइज करते होंगे कि यार क्या किया, उस खाली स्लेट पे क्या लिख डाला। लेकिन ऐसे भी माँ बाप हैं जो बचपन से अपने बच्चों को इंकिसारी सिखाते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं। बच्चा अगर टीचर से या घर में किसी काम करने वाले मुलाजिम से ऊंची आवाज में बात करे तो माँ या बाप कहते हैं यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस बिकॉज ही इज गिविंग अस गुड सर्विसेज। अगर तुम इसे पैसे दे रहे हो तो उसके बदले में ये तुम्हारा वो काम कर रहे हैं जो तुम खुद नहीं करना चाहते। अच्छा, इसकी रिस्पेक्ट करो, इससे इज्जत से बात करो, क्योंकि बेटा इसे भी अल्लाह ने बनाया, तुम्हें भी अल्लाह ने बनाया। देखो सायरा, अगर अनापरस शख्स अपने आप को बड़ा आदमी समझता है ना, तो आज मेरा हर सुनने वाला ये बात जान ले कि बड़ा आदमी कौन होता है। बड़ा आदमी वो होता है जिसके पास बहुत रुपया पैसा होता है, बड़ा आदमी वो होता है जिसका घर बहुत बड़ा होता है, नहीं, बड़ा आदमी वो होता है जिसकी महफिल में बैठ के कोई अपने आप को छोटा ना समझे। बड़ा आदमी वो होता है कि जिसके साथ जब कोई शख्स बैठे तो उसे पता हो कि मेरी इज्जत नफ्स महफूज है। बड़ा आदमी वो है कि जिसको ये पता हो कि मेरे पास मिट्टी का प्याला है और इसके पास क्रिस्टल का ग्लास है, लेकिन इसमें पीने वाला पानी एक ही है। वाह। और ये एहसास वो शख्स दिलाता है, वो बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी इमारात से, बड़ी गाड़ियों से, बड़े बंगलों से नहीं, बड़े रुतबों से नहीं बनता। वो बनता है जब उसका रास्ता सिरातुल मुस्तकीम पे अल्लाह की तरफ होता है, कि उसका सर उठा हुआ होता है, क्योंकि वो उसके काम की डिमांड है, लेकिन उसका दिल झुका हुआ होता है। कि क्या खूबसूरत शेर है कि जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। वाह।
सुराही सर निगूं होकर भरा करती है पैमाना। वाह। तो यही हाल है कि अब आपकी मर्जी है कि आप अपने आप को क्या बनाते हैं। कुमार की मिसाल दी जाती है, मुझे भी याद आ गया, वो चिल्लमें बना रहा था तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम चिल्लम क्यों बना रहे हो। उसने कहा आजकल हुक्का लोग बहुत पीते हैं, अच्छा है बिकेगी ज़्यादा। उसने कहा गर्मियाँ आ रही हैं, सुराही बनाओ, सुराही भी बहुत बिकेगी। उसने कहा बात तो तुम सही कर रही हो। उसने सुराही के लिए मिट्टी वो तोड़ के चिल्लम की सारी सुराही बना ली। मिट्टी में से आवाज़ आई कि ये तूने क्या किया। तो उसने कहा सुराही बना रहा हूँ, मेरा रुझान बदल गया कि अब मैं चिल्लम के बजाय सुराही बना रहा हूँ, मेरा रुझान बदल गया। उसने कहा तुम्हारा तो रुझान बदल गया, मेरी तो किस्मत बदल गई। चिल्लम बनती तो खुद भी जलती, दूसरे को भी जलाती। सुराही बनी हूँ तो खुद भी ठंडी रहूंगी और क्या दूसरे को भी बात ठंडी। है, जबरदस्त तो यार, जिंदगी में सुराही बनने की कोशिश करें। वाह, वाह, अना वाह, परस्त वाह। रहेंगे तो चिल्लम बनेंगे, खुद भी जलेंगे, दूसरे को भी दूसरे को जलाएंगे, भी जलाएंगे। तो फ़ाइदा पहुंचेगा ही नहीं। हाणे इन्ही ॻाल्हियुनि ते हिकिड़ी ॿ टे पॉइंट्स ऐं जेको ज़रूरु ॻाल्हाईंदसि। जीअं मूं चयो त मुंहिंजो भाउ हमेशह उन्हनि जे लाइ असां ते प्रेशर हूंदो आहे, तव्हांखे ॿाहिरि कोन्हे वञिणो, तव्हांखे मूंसां प्रोग्राम करिणो, मूंखे मज़ो थो अचे। जेसि ताईं मूंखे ॿियो तव्हांजे नेबल बदल ते न मिले, पूरी कोशिशि कईसीं त को सिंधी लैंग्वेज में मिले, पर न मिली सघियो त इरम साथी। अॼु उहो ई मज़ो, उहो ई जेको इहो चऊं न ॿुधण जी चाह ऐं सिखण जी चाह अञा वधंदी वञे इरम सां, त मूंखे मज़ो ईंदो आहे। तंहिं करे अवेज़ भाई हाणे तव्हां ते मुंहिंजो प्रेशर घटि आहे, हाणे मूंखे इरम मिली वई आहे, तंहिं करे हाणे ॾिसो आउं बि डिमांड में अची वई आहियां। अच्छा, सेकेंड इहे त इरम ॻाल्हि कई त पैसा ईअं मथां बसि अचनि पिया। हा, मथां पैसा अचनि पिया। वो टीचर्स भी तो बैठे हुए हैं, पैसे हाँ खिंच कर कहाँ जा रहे हैं, बस बैग लेके, हाँ ये गिरा ये पकड़े। वहाँ पर कहीं भी ये नहीं है, चाहे उनकी इंसल्ट क्यों ना हो रही हो। अब इंसल्ट में इस पे एक सवाल बनता है कि इज्जत नफ्स और अना में फ़र्क, वो भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और पॉइंट कहूँ जो आप ही की बातों से मैंने नोट की। आपने कहा जब आप बच्चों पे बात करी थी, जो मैंने कहा कि सवाल किया कि अना परस्ती उसको आ जाती है। अब हम कहते हैं कि बच्चों को, मेरा एक्स्ट्रा होता है शेयरिंग सिखाओ बच्चों को शेयरिंग तो सिखाई जा रही है आज भी, लेकिन उस शेयरिंग का रुझान किस तरह बदला है, रुख किस तरह बदला है कि वो शेयरिंग अब ऐसी हो गई है, गरीब है ना दे दिया करो बेटा, तुम्हारे पास किस बात की कमी है, निकाल दिया करो 1000। वो उस वक्त उसको 1000 रुपया भी दे देगा स्कूल के अंदर, थोड़ा सा भी कम है, चाहे वो उसी टक्कर का है तकरीबन, क्योंकि उसी स्कूल में पढ़ रहा है। तो उसको ये दिखा रहा है कि तुम शेयरिंग को इस तरह दो, तुम मुझसे कम हो। तो यानी कि शेयरिंग अब इस लेवल तक आ चुकी है कि आप उसको मतलब दे भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो अपने तरीके से सिखा रहे हैं। दूसरा ये कि जो आप सर्वेंट रखते हैं, पहले सर्वेंट था कि आपका काम करेगा, अब सर्वेंट एक नहीं है, ये तुम्हें पानी पिलाएगा, ये तुम्हें सुबह जगाएगा, ये तुम्हें तैयार करेगा, यानी कि 4 सर्वेंट एक बच्चे के। तो मुझे बताएं उसमें मैं क्यों ना आए। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ ना, हम अपने बच्चों के ब्लैंक कैनवस के ऊपर जो कुछ लिख रहे हैं, जो रंग भर रहे हैं, वो उनकी शख्सियत को तबाह करे। अब जैसे अभी तुमने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो, हमेशा हमने सुना शेयरिंग इज केयरिंग। एक शेयर होता है जिसमें केयर होती है कि यार मेरे इस दोस्त को जरूरत है, मेरे इस भाई को ज़रूरत है, मेरे इस पड़ोसी को ज़रूरत है, मेरे घर में ये शख्स काम करता है, इसको ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत का ख्याल रखना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खुशनुदी के लिए कोई चीज़ शेयर करना। आजकल मैं तुम्हें एक बात बताऊं, क्योंकि एजुकेशनल फील्ड से भी मेरा ताल्लुक है, अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि स्कूल्स में शेयर नहीं कराते अब छोटे बच्चों को, कहते हैं अपना अपना लंच करो। वो जो शेयरिंग और केयरिंग वो खत्म। अच्छा, उन्होंने इसको ना हाइजीन का वो दे दिया नाम। दिस इज नॉट हाइजीन। अगर टीचर भी इवन ये करे कि ठीक है टुडे लाइक 2 kids they'll share their lunch, अपना हाफ करके टीचर दे, हमको सिखाया जाता था नहीं, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। आप एक देखो ना, वो है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, महमूद बादशाह है, अयाज गुलाम है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वाह, सब अल्लाह के बंदे हो गए। जब सफ में खड़े हो गए ना, तो अब महमूद बंदा नवाज नहीं है, क्योंकि वो खुद बंदा बना हुआ है, अयाज भी उस वक्त बंदा बना हुआ है, वो लेने वाला भी नहीं है, क्योंकि वो जिससे लेने वाला है उसी के आगे वो सर झुका रहा है। मगर इस माशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं सायरा, जो आज भी मोहब्बत करना सिखाते हैं, चाहत करना सिखाते हैं, खुदी को जीना सिखाते हैं,
اور خودی کو اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنا سکھاتے کہ بیٹے تمہارے پاس ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے, اس میں دوسروں کا بھی حق ہے. دیکھو نا, یہ تو اللہ نے بھی کہ تمہیں جو کچھ میں دے رہا ہوں اب تم اس میں سے دو. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں نے جو دیا, اے بندے تیرا کیا, نہ تیرا رتبہ تیرا, نہ تیرا ذہن تیرا, نہ صورت تیری, نہ مال تیرا, میں نے دیا. اب میں نے دیا نا, اب تو اس میں سے دے. تو میں آنیسٹلی تمام پیرنٹس سے بھی تمہارے پروگرام کے اتنے اچھے توسط سے یہی کہوں گی کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال کچھ یوں ہوتی ہے کہ اناؤں, خود غرضیوں اور نفرتوں کے گہرے پانی میں, اناؤں, خود غرضیوں, نفرتوں کے گہرے پانی میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. تو یہ درویش بننے کی کوشش کیجئے, کیونکہ درویش میں خودی ہوتی ہے, خود پسندی نہیں, انا نہیں ہوتی, میں نہیں ہوتی. صحیح. وہ سر جھکاتا ہے, اس کے ساتھ دل بھی جھکاتا ہے اور اللہ کو مناتا ہے. اور اللہ کو منانے کے لیے مولانا روم کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے بے شمار طریقے تھے, لیکن میں نے اللہ کا پسندیدہ ترین راستہ چنا. وہ کیا؟ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا. کیا بات. تو جس نے اللہ کے بندوں سے محبت کر لی نا, بات ختم. اس نے اللہ سے محبت کر لی, اور جس نے اللہ سے محبت کر لی اس سے اللہ نے محبت کر لی, اور جس سے اللہ نے محبت کر لی اس کی تو دنیا ہی بدل گئی. تو یار ایک چھوٹا سا فلسفہ ہے, آج جمعے کا دن ہے, اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیا کریں. دیکھو آج کا دن دنوں کا سردار ہے, اللہ کا پسندیدہ ترین دن ہے, تو کوشش کیا کریں کہ آج کے دن وہ نیکی کریں جو رب کو پسند آئے. کہ دیکھو سورہ آل عمران کی آیت کا مفہوم ہے, جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے, ہرگز ہرگز تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی. ابھی جو تم نے یہ بات کی نا کہ بچے کو کہتے ہیں دے دو کیا جاتا ہے, ہرگز ہرگز تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی اگر تم وہ چیز نہیں دو گے جو تمہاری محبوب ترین ہے. واہ. کیونکہ تم دے کس کو رہے ہو, تم مجھے نہیں دے رہی سائرہ. If you are helping me, basically you are offering this to اللہ رب العزت. Exactly. یہی چیز تو سمجھنی ہے. اللہ کو دے رہے ہو بھائی, جس بندے کو نہیں دے رہے ہو. اپنے نمبر بنا رہے ہو, اکاؤنٹ ادھر کھلا ہوا ہے, Exactly. صحیح. جمع ادھر کرا رہے ہو, وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے, وہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے. خدا رہا اس میں سیو کرو, اور آج کے دن کی اہمیت کو جانیں, اور کوشش کیا کریں اد بدا کے کہ آج کوئی نیکی ہو جائے. کیا آج کسی کا دن بن جائے. پورے ہفتے کی اگر نچوڑ رکھ کے ہم اس طرح کریں تو بھی اچھے کام ہو جائے. آج کسی کے چہرے پہ کچھ ایسی مسکراہٹ لے آئے کہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے. آج ہم کچھ ایسا کام کر لیں کہ میرا رب میرے اوپر ناز کرے. کیا بات ہے. سچ بات بتاؤں, ٹائم نوٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ باتوں میں اتنا مزہ ہے. اور وہی والی بات کہ اٹریکشن اور یہ سب کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ سے, چاہے یہ تو ایک اللہ سے لو لگانے والی بات ہو گئی, لیکن عام بات پہ بھی ہم جو باتیں کر رہے ہوتے تو اس میں بھی ہمارے, اگر کوئی کہتا ہے یار یہ بڑا اچھا بولتی ہے یا بولتا ہے, تو اس میں بھی ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ دیا جائے تو وہ ملتا ہے. تو ساری چیزیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے, تو اس کا ریفلیکشن چہرے پہ آتا ہے, دنیا کے سامنے بھی آتا ہے. بس یہ چیز سوچنی ہے. تو تھینک یو سو مچ, بہت مزہ آیا. لیکن یہ خوشی ہے کہ وہی والی بات کہ پورے ہفتے کی ہم نچوڑ نکال لیں جمعے کے دن, تو مجھے بھی یہ رہے گا. پھر ایک ہفتے کے بعد یہ آئیں گی, اور انشاءاللہ ابھی تو 12 ربیع الاول اسٹارٹ ہو رہا ہے, تو ابھی تو بہت سرپرائز بھی ہے. ہماری ٹرانسمیشن بھی لائیو آئے گی, آپ ضرور دیکھیے گا. لیکن ٹائم ابھی پورا ٹوٹلی فکس نہیں ہوا, لیکن شام کے ٹائم اساں کا گڈ کنیکٹ رہے جو ڈس جو اساں میں انجوائے कंदासीं तव्हां कजो. ऐं थैंक यू सो मच. ऐं असां महमूद भाई खां बि जेको आहे ॿुधंदासीं, पर उन खां पहिरीं आउं हिकु ॿ पॉइंट ज़रूरु चवणु चाहींदी. सॼे निचोड़ ते शहरनि खे बहितर कयो. उहा ई ॻाल्हि त करंट न सेविंग अकाउंट आहे, हिन अकाउंट खे भरणो आहे. इहा पोटली जमा पई थिए, सिकनि जी पोटली कोन हूंदी, ई गुनाह ऐं सवाब जी पोटली. ई जेको फ़रिश्ता हिन पासे वेठा अथव न ॿिन्ही शोल्डरनि ते, इहे सभु काउंटिंग पिया कनि तव्हांजी सोच खे बि. ऐं सोच जो दारोमदार, अमल जो दारोमदार सोच ते हूंदो आहे. त सोच तव्हांजी सुठी आहे ऐं तव्हां न पिया करे सघो छो जो तव्हांजा वसाइल ई कोन्हनि, त उहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे. पर रबड़ तव्हांजी नियत पहुचे पई, पंहिंजी नियत खे रखो. शहरनि ते ॾाढी निजी, ॾाढी क़रीबी ॻाल्हि आहे. पंहिंजी चवंदसि, मुंहिंजी धीअ हिकिड़ी आहे त उहा लाॾनि खां पलियल आहे, त लाज़मी हिकिड़ो अकेलो ॿारु
डोमिनेट हूंदो आहे सभिनी ते, पंहिंजे कज़न्स ते बि, हालांकि या वॾा कज़न्स उन्हनि जे अॻियां बि मुंहिंजी धीअ सुपीरियर, हू हुनखे फील बि कराईंदा आहिनि, छो जो उहो थोरो रिज़र्व रहंदी आहे, बातूनी कोन्हे, शाय पर्सन आहे, उहो पंहिंजी अहमियत कराइणु ॼाणींदी आहे, पर उहो सॼो कमाल हुनखे, त मूं हुन में थोरो कुझु ॾींहंनि में ॾिठो अथव, हुनखे सभु तारीफ़ूं था कनि त हुन में थोरो मूं ॾिठो, मम्मी मूंखे त सभु था पसंदि कनि, पंहिंजी दोस्त खां डिस्कस कंदे ॾिसी वियो त मुंहिंजा कज़न्स त मूंखे इलाही प्यारु कंदा आहिनि, मुंहिंजी त ख़ालाऊं चवंदियूं आहिनि त फरवा जहिड़ी थियो, त मूंखे ख़ुशी त थी, खिल त थी, पर मूंखे हुन में हिकिड़ी लफ़्ज़ आई त किथे मैं न अची वञे मुंहिंजी धीअ में, मूंखे हुनखे हेठि रखिणो आहे, डाउन टू अर्थ करिणो आहे, हुनखे मैं कोन्हे सेखारणी, मुंहिंजी तरबियत ते आङुर अची वेंदी, मूं पंहिंजे रब जे तरफ़ां चां पंहिंजे अॻियां अलाह जे अॻियां छा पारींदी। हिकु माईअ हिकिड़ी आलमा ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त आउं रोयां इन लाइ कोन्ह पई त मूंसां छा थींदो, ऐं रोयां इन लाइ पई त मुंहिंजे ॿार सां छा थींदो, छो जो मुंहिंजो ॿारु अगरि आउं ग़लति कुझु कयां थी त मुंहिंजी ॿार खे इहो सभु कुझु, जो मूंखे त ॼाण मिली वई आहे हिनखे जी, पर मुंहिंजे ॿार खे उहा ॼाण कोन्ह पई ॾियां, मुंहिंजो ॿारु त उन बाहि में न सड़ी पए, ऐं आउं मां आहियां, आउं त कोन्ह बर्दाश्त करे सघंदसि, त मूंखे हींअर खां हुनखे तरबियत ॾियणु खपे, त पंहिंजे ॿारनि खे पाण तरबियत ॾियो। मूं पंहिंजी धीअ खे विहारियो ऐं मूं हुनखे चयो, जे अगरि ख़ाला बि तोखे कुझु चवंदी, भले उहा राइट न हुजे, तूं राइट हुजी, तोखे कोन्हे आर्ग्यू करिणो, बसि इहा ॻाल्हि सम्झी वठि, तो हुन सां आर्ग्यू कयो, तो मूंसां कयो, ऐं मूंसां कयो, ऐं कुझु चवंदसि कोन्ह, छो जो मूंखे मार मुंहिंजे दिमाग़ में कोन्हे, टॉर्चर करणु कोन्हे, बसि ऐं ख़ामोश थी पासे ते वेही रहींदी, ॻाल्हाइणु बंदि करे छॾींदीसीं। पर अल्हम्दुलिल्लाह आउं पंहिंजे रब खां जेतिरो शुक्र कयां त गॉड गिफ्टेड आहे, अलाह मूंखे गिफ्ट ॾिनो आहे, अलाह सभिनी खे ईअं ई मासूम प्यारियूं न्याणियूं पुट ॾे जो माइट सुकून में हुजनि ऐं बच्चा सम्झी वञनि, सो सभिनी खे अहिड़ा ॿार हुजनि। सो महमूद भाई चवंदसि त तव्हां हम था ॿुधायो, नात था ॿुधायो, हमद, पोइ ठीकु आहे, तव्हां असांखे हमद ॿुधायो। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो खानाए लाशोर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, तलाश उसको न कर बुतों में, वो जान लेता है नियतें भी, वो लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, छा ज़बरदस्त ऐं ज़बरदस्त। त वरी हिकु बार ॿीहर चवंदसि थैंक यू सो मच, त नंढड़ी साई ते था वञूं ऐं अचूं था। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी नाज़रीन, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां जेको आहे माशाल्लाह असांजे जुमे जो ॾींहुं आहे, जीअं इरम बि तव्हांखे चयो त सॼनि पूरे हफ़्ते जे ॾींहंनि जे हिसाब सां
जुमे जो एतमाम ख़ासि तौर ते जेके आहिनि चांवर जेके न बि खाईंदा आहिनि ॾींहं जे टाइम ते मिली जुली सभु चवंदा आहिनि त असां नमाज़ पढ़ी ईंदासीं ऐं गॾु मानी खाईंदासीं ऐं दस्तरख़्वान अमूमन माण्हू एतमाम कंदा आहिनि जेके डाइनिंग टेबलुनि ते वेहंदा आहिनि तकड़ तकड़ में बि खाईंदा आहिनि तकड़ तकड़ में वेंदा आहिनि उहो जुमे जो एतमाम कंदा आहिनि त घर में वियूं कारोबारी हज़रात बि जुमे खां पोइ ई पंहिंजो कारोबार खोलींदा आहिनि जुमे जी नमाज़ खां पोइ घर में मानी खाई अची वेहंदा आहिनि पंहिंजी फैमिली खे टाइम ॾींदा आहिनि मानी खाइण दस्तरख़्वान ते जेको आहे पट ते वेही जेको दस्तरख़्वान लॻंदो आहे ऐं ख़ासि तौर ते असां त नंढे हूंदे खां ॾिसंदा आया आहियूं असांजा घर आहिनि असांजी दोस्तनि जा घर आहिनि त ख़ासि एतमाम थींदो चांवर था ठाहियूं ॾींहं जे टाइम ते थधा मौसम हुजे मिठो मौसम हुजे त जुमो आहे न जुमे जो चांवर जो हज़म बि थी वेंदो आराम सां राति जो मानी खाई छॾींदासीं ऐं ॿार जे शाम जो तकड़ि कंदा त शाम जो मग़रिब जे टाइम ते ई उन्हनि खे चांवर इहे 2 टे गिरा जेके बचंदा खाराए सुम्हारे छॾींदासीं पाण 2 टे मानियूं विझी छॾींदासीं इहो हिकिड़े घर जो ॿोड़ जो प्यालो नंढड़ा हूंदा आहियूं त ॿोड़ जो प्यालो माइट जेके आहिनि उहे छा कंदा आहिनि हिकिड़ो प्यालो कढी रखंदा आहिनि त हीअ राति जो चांवरनि जो लपी ठाहे छॾींदासीं ऐं उन में ॿोड़ विझी रस थोरो खटि हलंदो मानीअ में वधीक थो हले इहे ॻाल्हियूं बाज़ारि त हिकिड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि पर इहे केॾियूं हार्ट टचिंग ॻाल्हियूं आहिनि केॾियूं उन्हनि माना मोहबत जो ॻाल्हाईंदे इंसान जे अंदरि जी ख़ुशी रिफ्लेक्शन जे तौर ते चहिरे ते थी अची वञे ऐं मज़े जी ॻाल्हि इहा मुंहिंजे हिकिड़े घर जी कहाणी कोन्हे ॿुधण वारे जे घर जी बि कहाणी हिते वेठल ॿुधण वारनि जे घर जी बि कहाणी जेको ॿुधाए थो उन्हनि जी बि कहाणी त इहा कहाणी उहा आहे जेकी हिक ई जहिड़ी कहाणी आहे सिर्फ़ु तायुनि असांखे करिणो आहे उनखे असां जेको मूं ईअं चयो त शेयरिंग खे असां तब्दील करे छॾियो आहे बाबा तूं त अफोर्डेबल आहीं ॾेई छॾिजांइ तुंहिंजो दोस्त आहे वीचारो ग़रीब आहे 1000 रुपया ॾेई छॾिजांइ 5000 ॾेई छॾिजांइ उहा शेयरिंग जेकी आहे ॿार खे सेखारण जी मदद में ऐं अञा परस्तीअ में तब्दील थी वई त इहो सभु असांजे हथ में आहे त असां माइट छा पिया सेखारियूं त थोरो इन जो ख़्यालु कबो असां वटि माशाअल्लाह सां हींअर 3 महिमान मौजूदु आहिनि जेके हिकु आहिनि सैयद शहरयार दाऊद साहब जिन जेके क़ुरान जा इस्लामिक कॉलर या क़ुरान जा रिसर्चर यानी क़ुरान ते रिसर्च करे ॻाल्हाइण वारा त इहा तमामु बेस्ट शइ हूंदी आहे त तव्हां क़ुरान मां कढी करे उन जे हवाले सां था ॻाल्हायो त तव्हां का गुंजाइश न थी रहे ग़लति या बेवकूफ़ाना ॻाल्हि जी त इहा वधीक ख़ुशी थींदी आहे बज़ाते ख़ुदि मूंखे बि पर ख़ुशीअ जी ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजे लाइ इहो हूंदो त असां वटि माण्हू अहिड़ा विया आहिनि जेके ॿिन्ही जेको आहे उन्हनि सां तालुक़ु रखनि शिया मज़हब सां सुन्नी सां पर अहिड़ा हुजनि जेको बैलेंस करे हलनि त हिकु अहिड़ा ई असां वटि माशाअल्लाह सां हाणे त असां उन्हनि खे बि कोन था छॾूं अलामा हयात अब्बास नजफ़ी उन्हनि खे बि वेलकम कंदासीं सो काफ़ी टाइम खां पोइ छो जो ज़ियारतुनि ते वियल हुआ पर माना उन्हनि खे बि असां छॾियो न आहे त हाणे अची विया आहियो रजिस्टर थी विया आहियो असां वटि तव्हां सां असांखे मज़ो ईंदो आहे छो जो लाज़मी हिकिड़ी बॉन्डिंग ठही वेंदी आहे कि नए माण्हू खां सम्झण ऐं सम्झाइण में फ़र्क़ु लॻंदो आहे असांखे भई हुनखे बि त हिननि सां सम्झ अची वई आहे हाणे हिननि खे कुझु रिपीट कोन करिणो पवंदो आहे पाण ही ईंदा आहिनि मूंखे अहिड़ियूं ॻाल्हियूं सम्झाए वेंदा आहिनि या चवंदा आहिनि हीअं ॻाल्हाए हीअ न ॻाल्हाए पॉज़िटिव अप्रोच ॾींदा आहिनि इहे शयूं हिकिड़ियूं ॾाढियूं अट्रैक्शन वारियूं हूंदियूं आहिनि जेके हर कंहिं मां नथियूं मिलनि त अहिड़ा मुंहिंजी हिननि सां दिलि ॻंढिजी वई आहे अच्छा मुंहिंजा हिकु मुंबोला भाउ थियल आहिनि हिकु दफ़ा पहिरीं बि आयल आहिनि पर हींअर मुंहिंजी उन्हनि सां पसे पर्दा ॾाढी बॉन्डिंग रही आहे उनजी तबियत बि ॼाणण जी मौक़ो मिलियो जेके उन्हनि जा कम आहे एज़ को बि कमु हूंदो या मूंखे फ़ोन कंदा त तव्हांखे मैडम हिते अचिणो आहे अदी हिते अचिणो आहे त उहा ॻाल्हि बि मूंखे उन्हनि जी पॉज़िटिविटी लॻी त मूंखे उन्हनि जी बि इहा ॻाल्हि ॾाढी वणंदी आहे माशाअल्लाह इलाही सुठा सोशल वर्क जेको आहे घणो कंदा आहिनि नात ख़्वां त आहिनि पर हिननि जा जेके मूं कम ॾिठा आहिनि न त मूंखे उन्हनि बि ॾाढो अट्रैक्ट ऐं अट्रैक्शन ॾिनी आहे त एॾो नंढी एज में एॾा सुठा एॾा वॾा कम करणु हर कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे छो जो तव्हांखे मिले पियो तव्हां वेही खाओ तव्हां गुटलिन ॻणण जो तव्हांजो कहिड़ो कमु आहे पर न ही उन्हनि खे न सिर्फ़ु ॻणे करे छो जो उहे ई 2 पहलू अची विया न कम सां तालुक़ु तव्हांजी गुटलिन में कहिड़ो कमु उहा बि ज़रूरी हूंदो आहे किथे पर किथे इहो बि ज़रूरी हूंदो आहे त उहे गुटलियूं बि ॻणियूं छो जो उन्हनि जी बि ज़रूरत हूंदी आहे त किथे कीअं यूटिलाइज़ कजे सो अहिड़ा ई मूं वटि पंहिंजो नात ख़्वां मौजूदु आहिनि हामिद रज़ा जंहिंखे बि तव्हां वेलकम कयूं सो अस्सलाम वालेकुम टिनिनि खे मुंहिंजे 2 महिमाननि खे हाणे जहिड़ो लॻे थो आउं टीचर जा क्लास पई वठां त सो माशाअल्लाह सां अॼु असां वटि आहे सख़ाफ़त हिन माशरे जे हवाले सां त तव्हां भले पंहिंजे पेसिफिक तरीक़े सां टॉपिक जो नालो बि ॿुधायो ऐं उन ते बि ॻाल्हायो जेको साहिब हैसियत जे हिसाब सां जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है सूरे 4 पारे की पहली आयत है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून
مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا کہ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے، بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی بہترین شے جس کو تم لو رکھتے ہو، پیار کرتے ہو، تمہاری بہترین شے ہے، تمہاری بیسٹ فیوریٹ چیز، اسے تم اللہ کی راہ میں نہ قربان کر دو، اسے اللہ کی راہ میں نہ دے دو. یعنی اس طرف علماء کرام، محدثین کرام نے، مفسرین نے فرمایا اشارہ ہے سخاوت کا، کہ جو صاحبان ثروت ہیں جن کے پاس اللہ نے عطا کیا ہے، وہ اپنے مال میں سے معاشرے کے ان انڈر پریویلیجڈ لوگ، یعنی ڈیزرونگ لوگ جو اتنا زیادہ ان کے پاس دنیا کے وسائل نہیں ہیں، جو ہینڈ ٹو ماؤتھ پوزیشن میں ہیں، جن کو کھانے پینے، کپڑے لتے، یعنی سروائیو کرنا سوسائٹی میں جن کے لیے مشکل ہے، تو اپنا دست، اپنا بازو، اپنا ہاتھ اتنا وسیع کرو، اتنا کھلا کر دو کہ ان تک پہنچ جائے اور وہ اس دنیا میں رہنے میں آسانی محسوس کریں. نمبر 1. دوسری بات یہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن میں 2 خوبیاں ہوتی ہیں، ایک تو وہ سخی ہوتا ہے، دوسرا وہ خوش اخلاق ہوتا ہے. اور فرمایا مومن میں 2 برائیاں اکٹھی ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی. نمبر 1 وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، نمبر 2 وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا. کنجوس ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، بد اخلاق ہوگا تو کنجوس نہیں ہوگا. اگر یہ دونوں ایٹ اے ٹائم ہیں تو اس کا مطلب مومن نہیں ہے. آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کو اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے تو ہمیں ان نعمتوں کو بانٹنا ہے، ان نعمتوں کو جمع نہیں رکھنا. پانی کو ایک جگہ اگر آپ روک دیں کیا ہوتا ہے؟ بدبو پڑ جاتی ہے، اس میں کائی آ جاتی ہے، کیڑے اس میں جنم لے لیتے ہیں. اس لیے پانی بہتا ہوا جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید، یعنی ہمارے اسلام کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی کہ ایک تو چیز آپ زکوٰۃ دو گے جو فرض ہے 2.5% کے حساب سے آپ پر، دوسری چیز زکوٰۃ سے وہ فرض ادا ہو گیا آپ کا. اگر آپ پر اتنا مال نہیں ہے جو زکوٰۃ نہیں ادا کی تو آپ پر گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بہت زیادہ آپ کو اجر اور اللہ کے قریب کرنے والا، بلکہ جنت میں لے جانے والا، جنت میں لے جانے والا کون سا کام ہے؟ سخاوت. دیتے رہو، دیتے رہو، کہ جب ہم دیتے رہیں گے، کہتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمارا ہاتھ جب تک اوپر والا ہاتھ ہوگا اللہ تعالیٰ دیتا رہے، اور جب تک ہم بانٹتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا. یہ اس کا اصول ہے. جیسے اب بٹن آن کیا تو لائٹ جلنی ہے اگر بجلی ہے تو، ٹھیک ہے نا، لائٹ جلنی ہے. اگر بٹن آن کر لائٹ نہیں جلے تو ایسا ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ دیتے رہو گے آپ کے پاس نہیں آئے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. اسی لیے لازم ہے ایک سوسائٹی کو، کیونکہ اتنی بڑی سوسائٹی اللہ نے دنیا قائم کی ہے نا، تو اس کی سروائیول کے راستے بھی بتائیں. وہ کیا ہے؟ سخاوت ہے. وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے. وہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بانٹنا ہے. اگر ہم یہ آج کام کرنا شروع ہو جائیں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت جلد ہماری سوسائٹی میں بہت اچھا امن اور بہت اچھی خوشحالی آ جائے گی انشاءاللہ. بے شک، بے شک. جی سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات. خداوند عالم جو احسان آ جंहिं असांखे हिन जुमे जे ॾींहं ते हिन हिकु अज़ीम मौज़ू ते ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो, अवां जे तवसुत सां माण्हुनि ताईं हिकु सुठो ऐं सुहिणो पैगाम पहुचाइण जी कोशिशि कंदासीं. ख़ुदावंद आलम क़ुरान मजीद में जिथे जिथे पंहिंजी नमाज़ जो हुकुम ॾिनो आहे, उन नमाज़ सां गॾु हुकुम ॾिनो आहे वातु ज़कात, ज़कात ॾियो. हाणे इन मां मक़सदु इहो आहे त अलाह साईं असांखे हिते बैलेंस पॉलिसी सेखारी त जॾहिं तव्हां हुकूकुल लाह जी फ़िकिर था कयो उते हुकूकुल इबाद जी फ़िकिर कयो. जीअं नमाज़ जुमा आहे, जुमे जे ॾींहं ते नमाज़ नफ़ुल पढ़णु, सुनत पढ़ण जो सवाबु ॿियनि ॾींहंनि खां वधीक आहे. अहिड़े तरीक़े सां जुमे जे ॾींहं ते ग़रीबनि जी मदद करण जो सवाबु ॿियनि ॾींहंनि खां वधीक आहे. ₹1 जो सदको 100 रुपए जे सदके जे बराबरि आहे. अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं तव्हां उम्रे ते था वञो, जीअं तव्हां ज़िक्र कयो हाणे त उम्रे ते ज़ियारात ते इंसानु वञे थो, उन पाकीज़ा जॻहियुनि ते सदके जो सवाबु आम घर में सदके खां वधीक आहे. तव्हां खाने काबा वटि पहुता, उते जेको तव्हां सदको ॾींदव उन सदके जो सवाबु घर जे सदके खां वधीक आहे. हाणे हिते हिकिड़ी ॻाल्हि आहे त साहिब जेके सरवत माण्हू आहिनि, साहिब हैसियत माण्हू आहिनि, उन्हनि जो मुआशिरे में किरदारु आहे.
जेतिरे ताणी उहे किरदार अदा न कंदा मुआशिरो अॻिते न वधंदो। हाणे छा मक़सदु आहे, छा इन जो मक़सदु इहो आहे जॾहिं असां ॻाल्हि कंदा आहियूं ज़कात जी, असां ॻाल्हि कंदा आहियूं ख़ुम्स जी, असां ॻाल्हि कंदा आहियूं उशुर जी, त माण्हू इहो सम्झंदा आहिनि त शायदि तव्हां मुआशिरे खे फ़क़ीर बनाइण था चाहियो, ताकी हिकिड़ी तरफ़ फ़क़ीर बीठा हुजनि, ॿी तरफ़ ॾियण वारा बीठा हुजनि, पोइ माण्हू महिनत कोन कंदा, पोइ मुआशिरो तरक़ी कीअं कंदो, घुरण वारा थींदा। इस्लाम इहा सोच न ॾिनी आहे। इस्लाम इहा सोच ॾिनी आहे त जेके साहिब सरवत माण्हू आहिनि उहे पंहिंजी ज़कात मंझूं, पंहिंजी सदक़ात मंझूं उन्हनि माण्हुनि खे जेके मुआशिरे जो कमज़ोर हिसो आहिनि उन्हनि खे मज़बूत बणाइनि, बेशक एतिरो मज़बूत बणाइनि जो हो आईंदा कंहिंखो घुरनि न। इस्लाम में हिकिड़ो अर्ज़ु जी ख़िदमत अक़दस में कयां, साहिब सरबत जेके हैसियत माण्हुनि जे लाइ हिकिड़ो ख़ासि चैप्टर आहे, मुफ़्ती साहिब मौजूदु आहिनि, इब्न सबील। इब्न सबील असां छाखे चवंदा आहियूं, सिर्फ़ु ज़रूरी न आहे त हिकिड़ो शख़्स जेको आहे कमाए नथो, जेको कमु नथो करे उहो ई मोहताज आहे, न, बाज़ औक़ात हिकिड़ो अहिड़ो शख़्स बि मोहताज थी सघे थो जेको पंहिंजे वतन में अमीर आहे, पंहिंजे वतन में ॾियण वारो आहे, सफ़र में अची करे कुझु अहिड़नि मसाइलनि जो शिकार थी वियो, हुनजो खीसो कटिजी वियो, हुनजो सामान चोरी थी वियो, हुन ते का अहिड़ी रस्ते में सफ़र में का बीमारी लॻी वई जो मसइलो को ज़हनी तौर हर शइ विसरी वई, हाणे हू मोहताज थी वियो। इस्लाम थो चवे त हिन जी इज़त आहे, जेका हिन जे पंहिंजे मुआशिरे में इज़त आहे उन इज़त सां हिनखे पंहिंजे घर ताईं पुॼाइण मुस्लमाननि ते, इंसाननि ते लाज़िम आहे, फ़र्ज़ु आहे हिन जी इज़त कयो। छाजे करे अगरि तव्हां हिन जी इज़त न कंदो हे मोहताज थींदो, हिन जी हैसियत ख़राबु थींदी। हाणे इस्लाम में जेको तक़ाज़ो आहे साहिब सरवत माण्हुनि खां, उहो सिर्फ़ु माण्हुनि खे मानी खाराइणु कोन्हे, माण्हुनि खे पाणी पीआरणु कोन्हे, ख़ाली दवा ॾियाराइणु कोन्हे, बल्कि इहो ज़रूरी आहे उहे माण्हू जेके बरसरे रोज़गार न आहिनि, तव्हां वटि जेके पैसा माण्हू पाण वटि हिकु शख़्स साहिब सरवत माण्हू लिकाए वेठो आहे, उहो पंहिंजा पैसा कढी अहिड़ो कारोबार शुरू करे ताकी उहे ग़रीब माण्हू जो हिसो थियनि। बेशक अहिड़ा कारोबार जा जीअं चइनि उहे ठाहिजे जो मुआशिरे में माण्हुनि जी मोहताजी ऐं मुफ़लिसी ख़तमु थिए, माण्हुनि खे पिनण ते मजबूर न कयो, माण्हुनि खे घुरण ते मजबूर न कयो। अॼु 28 सफ़र आहे, हज़रत इमाम हसन मुजतबा जेको रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिगर जो टुकड़ो आहे, उहो इमाम हसन जंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा फरमायो हसन ऐं हुसैन जन्नत जे जवान जा सरदार आहिनि, उहो इमाम हसन जंहिंजे लाइ जन्नत मो लिबास आयो, उहो इमाम हसन जंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे ख़ुतबे खे तवील कयो, उहो इमाम हसन मुजतबा जंहिंजे लाइ रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अगरि कंहिंखे मुंहिंजी सूरत खे ॾिसणो हुजे त हसन खे ॾिसे, उहो इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो हिकिड़ो लक़ब आहे करीम अहल बैत। अहल बैत सभु करीम आहिनि, ॾियण वारा आहिनि, ऐं उहो उन्हनि सभिनी में लक़ब आहे ख़ासि करीम अहल बैत। इमाम हसन मुजतबा जे लाइ हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत थो करे त इमाम हसन अलैहिस्सलाम हर साल मदीने जे सभई बेरोज़गारनि खे उन्हनि जी पंहिंजी तिजारत जो एहतमाम करे ॾींदा। माना उहे माण्हू जेके बेरोज़गार हूंदा, उहे माण्हू जेके नाकारा हूंदा, उन्हनि खे ख़ाली ख़ैरात न ॾींदा बल्कि उन्हनि खे पंहिंजो नंढड़ो तिजारत जो मक़सदु छा आहे, जे मसलन अरब में उन वक़्तु खजूर जी तिजारत हूंदी, मसलन उन वक़्तु अरब में जिन्स जी तिजारत हूंदी, उन्हनि खे माहौल ठाहे ॾींदा, बाद में उन्हनि खे चवंदा इहे पैसा तव्हां असांखे मोटाए ॾिजो, छो ताकी तव्हांजो सर शर्म खां न झुके, तव्हां इहो न सम्झो त मां ख़ैरात वरिती आहे। इस्लाम में मुफ़्ती साहिब जन मौजूदु आहिनि, सदके खां वधीक कंहिं शइ जो सवाबु आहे जंहिंखे असां विसारे छॾींदा आहियूं। असांखे सदको यादि हूंदो आहे त असांखे 100 रुपयो सदको ॾियणो आहे, 50 रुपयो सदको ॾियणो आहे, हिकिड़ी शइ जंहिंजो सवाबु सदके खां वधीक आहे, उन खे इस्लाम थो चवे कर्ज़ हसना। तव्हां इस्लाम में कंहिं मोमिन खे कंहिं मुस्लमान खे उहो कर्ज़ ॾियो जेको आसानी सां ॾियो, हुन खां तक़ाज़ो न कयो, उन कर्ज़ हसना जे 1 दिरहम जो सवाबु सदके जे 100 दिरहम जे बराबरि। छाजे करे त सदके में इंसान जो सर शर्म सां झुकंदो ऐं कर्ज़ हसना में सर न झुकंदो, हो चवंदो मां भई कर्ज़ आहे मूंखे मोटाए ॾियणो आहे। इस्लाम इंसान खे साहिब सरवत जे साम्हूं झुकाए नथो चाहे बल्कि उन सां गॾु बराबरि बीहारणु थो चाहे। ऐं साहिब सरवत माण्हू जी ज़िमेदारी आहे त पंहिंजे माल खे कारून जे खज़ाने वांगुरु लिकाइण जे बजाए मुआशिरे में खणी अचनि, ताकी जेके माण्हू कमज़ोर माण्हू आहिनि, माण्हुनि खे नाकार न चवंदुमि, जेके कमज़ोर माण्हू आहिनि उन्हनि कमज़ोर माण्हुनि खे सहारो ॾेई पाण वांगुरु मज़बूत कनि ताकी मुआशिरो तरक़ी कंदो। यादि रखो जॾहिं मुआशिरो तरक़ी कंदो हिन साहिब सरवत माण्हू जी हैसियत में कमी न थींदी, हिन जी हैसियत वधी वेंदी। छो जेको अल्लाह जी नज़र में कंहिं इंसान जे कमु ईंदो ख़ुदा हुन जे रिज़्क़ में एतिरी बरकत कंदो
अॼु हुनजे दरवाज़े ते 40 माण्हू था अचनि, सुभाणे हुनजे दरवाज़े ते 400 माण्हू। चवंदा आहिनि न त अलाह साईं कहिड़े रूप में अची वञे। हाणे तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि कई त पड़ोसीअ जो, हाणे सर तव्हां हींअर नोट कयो आहे अॼु जे माशरे जे हिसाब सां अगरि सोचूं त तव्हां ॾिसो माशरे में पहिरीं इहो हूंदो त पासे वारो बुखो आहे ॾियणु, या अगरि असां वटि बि घटि आहे त बट पुट कुझु रधो पिया ईअं न ख़ुशबू वञे हली हिकु प्याली ॾेई अचो त ॿिए जे करे या ॿ चाप खाई वठनि। पर हींअर ख़बर अथव छा आहे, पुट हल वठी अचूं ॾेखारियूं पासे वारनि खे त असां छा आंदो आहे, मुंहिंजा ॿार हितां खाइए, उहे काग़ज़ हुनजे दर जे अॻियां उछलाइनि ले ॾेखारियो। मां तव्हां अर्ज़ु थो कयां उनजे लाइ इहो यादि रखो तव्हां मुआशिरे में जॾहिं अहिड़ा माण्हू जनम वठंदा, अहिड़नि माण्हुनि जे जनम वठंदा जी मुफ़्ती साहिब चयो इहा बद इख़लाक़ी आहे। इहो इख़लाक़ जो तक़ाज़ो न आहे। इख़लाक़ जो तक़ाज़ो इहो आहे त जेको पाण खाओ था हुनजे बच्चनि खे उहो खारायो। जे नथा खाराए सघो त पंहिंजे बच्चनि खे अहिड़ी जॻह ते खारायो त हुननि जा बच्चा तंग न थियनि। ऐं यादि रखो मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि ते अलाह साईं मुख़्तलिफ़ अज़ाब नाज़िल कया आहिनि। उन मां हिकिड़ी उमत गुज़री आहे जेका ग़रीबनि खे ॾेखारे करे ज़लील कंदी हुई। अलाह साईं हुननि ते इहो अज़ाब नाज़िल कयो, हो नेमतुनि लाइ एतिरा परेशान थिया जो पाण घुरंदे नज़र आया। अगरि तव्हांजे हिकिड़े नंढड़े फेल जे करे के ग़रीब जी दिलि खे तकलीफ़ आई आहे, ख़ुदा तव्हांखे उन खां वधीक तकलीफ़ इम्तिहान में मुब्तला कंदो। अगरि तव्हांजे करे कंहिं ग़रीब खे ख़ुशी मिली आहे, अल्लाह तव्हांखे उन वधीक ख़ुशी। अरे वाह वाह, इहो त अलाह साईं चयो आहे। हमारे माशरे के अंदर जो बहुत सारी खराबियाँ हैं ना, उनमें एक खराबी ये भी है कि हमारे यहाँ दिखावा बहुत है। बकरा ईद पे 10 लाख का 20 लाख का करोड़ का जानवर लाके खड़ा करना, सेल्फी खींचना कर रहे हैं ना। अच्छा, इसी तरह हर साल आपने हज पे जाना है, जबकि आपके ऊपर हज एक दफ़ा फ़र्ज़ है। फिर हर साल में आपने 3-3 6-6 दफ़ा आपने जो है ना उम्रे करने। मेरा मानना ये है कि आप बार बार उम्रा करने से बेहतर है कि जो वाइट कॉलर लोग हैं उनको करना, उनकी नहीं उम्रा क्या करना है, पहले उनकी बुनियादी ज़रूरत है। उम्रा देखे फ़र्ज़ नहीं है, सुनना चाहिए। हालांकि मैं खुद उम्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप्स वगैरह जाते रहते हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर ने फरमाया तुम में से बेहतरीन इंसान, मुसलमान की बात नहीं की, मौलवी मुल्ला की बात नहीं की है, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदा मंद हो, नफ़ा बख्श हो। अब मैं अपने आप से खुद सवाल करूं, मैं किसी के लिए कितना फ़ायदा मंद हूँ, मैं किसी के लिए कितना नफ़ा बख्श हूँ, या खुदा न खास्ता कहीं मैं किसी के लिए नुकसान का बाइस तो नहीं बन रहा, कहीं मेरी ज़ात से किसी को नुकसान तो नहीं हो रही। इसीलिए फरमाया जन्नत जो है ना वो सखियों का घर है। हुजूर ने फरमाया सखियों का घर है जन्नत। हुजूर ने फरमाया सखावत जो है ना ये जन्नत के दरख्तों में से एक है और इसकी शाखें दुनिया में झुकी हुई हैं, तो इसकी शाखों को पकड़ लो कि ये शाखें तुम्हें नहीं छोड़ेंगी और अपने साथ जन्नत में ले जाएंगी। और इसके मुकाबले में और इसके मुकाबले में इसकी जिद क्या है, बुखल। और फरमाया बुखल अल्लाह ताला के करीब नहीं है, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता जो बुखल करता है, जो कंजूसी करता है, यानी होते हुए भी ना खर्च करे। फरमाया ये बकील है, ये जन्नत में नहीं जाएगा। उन्होंने फरमाया जन्नत में यहाँ भी कुछ नसीब नहीं, वहाँ भी कुछ नसीब नहीं। माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन अंदाज में साईं मुफ्ती शरियात दाऊद साहब हमेशा वांगुरु कुरान हदीस में इस्तदलाल पेश कयो। अर्ज़ ख़िदमत इहो आहे त मुआशिरे में जेको सभ खां मुफ़ीद माण्हू आहे उहो कहिड़ो? हिकिड़ो शख़्स आहे जेको चए थो बाबा मां त ख़ाली अॼुकल्ह तव्हां माण्हुनि जा हिकिड़ा मुख़्तलिफ़ तरीक़ा आहिनि त असां सिर्फ़ु माण्हुनि जी मानी जी फ़िकिर कंदासीं, असां माण्हुनि जी इस्लाम जी नज़र में सभ खां मुफ़ीद इंसान उहो आहे जेको सुठा इंसान तामीर करे, वाह, इंसान जी सुहिणी तरबियत करे। मन हिकिड़ो शख़्स आहे मानी खाराइणु एतिरो सवाबु आहे, यादि रखो मानी जंहिंखे तव्हां खारायो था दस्तरख़ान विछाइणु रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे, इन में कोई शक न आहे। दस्तरख़ान ते खाराइणु एतिरो सवाबु आहे जंहिंखे चयो आहे त जेको शख़्स ॿियनि खे खाराईंदो अल्लाह हुनजे रिज़्क़ में ऐं हुनजी औलाद जे रिज़्क़ में उतो इज़ाफ़ो कंदो जंहिंखे हिनखे तसवुर बि न हूंदो। इन में ऐं दस्तरख़ान ते खाराइण जे लाइ कंहिंजो ग़रीब हुजणु ज़रूरी न आहे, यादि रखो। तव्हां अमीर माण्हू खे दस्तरख़ान ते खारायो सवाबु आहे, कंहिं पंहिंजे मिडिल क्लास दोस्त खे खारायो त बि सवाबु आहे, कंहिं पंहिंजे पाड़े वारे खारायो त बि सवाबु आहे। हता एतिरे क़दुरु हुकुम आहे घर जी न्याणी खे दस्तरख़ान ते इज़त ऐं शराफ़ सां खाराइणु ईअं आहे जीअं हज़रत इस्माईल ऐं हज़रत इब्राहिम जी उम्मत खे मानी खाराइणु। इन में कोई शक न आहे,
لیکن نہ لیکن تے غور کرنے ضرورت آ لیکن تصور غور فکر ٹارگیٹ یہ ہوجے تے انسان جے کم میں کارآمند تھی سگے تھو اساں کے ان کم تائیں پہنچائنو ہاں گرجے تاکہ ان جی محتاجی ہمیشہ لا ختم تھی. سر جی پوائنٹس میں ॿ टे पॉइंट्स हिकिड़ो आयूं आहिनि जेके आउं तव्हां खां शेयर कंदी हलंदसि त हिकु माण्हू वटि हिकु माण्हू आयो की पिनण आयो त हुननि खे पैसा ॾिना अची वञी ॾेई अच त हुन चयो अला ऐं हीउ रियल वाक़ियो आहे तव्हां ॿुधो आहे हींअर सोशल मीडिया ते इलाही वायरल आहे त उन चयोसि त हिनखे ॾेई त हुन चयो न न न हीअ त हीअ कोन्हे सॼो ॾींहुं तूं करे इहे सभु नाटक आहिनि ऐं तूं न सर न ॾियो चई तोखे चयो न तूं ॾेई अच ॾेई आयो चई ॻाल्हि ॿुध तोखे हुनजी ख़बर कोन्हे पर अल्लाह खे ख़बर आहे ऐं ॿी ॻाल्हि त तूं जॾहिं चई थो त हुनखे न ॾे छा तोखे ख़बर आहे त तूं हिन क़ाबिल आहीं जंहिं जॻह ते तूं वेठो आहीं आउं हिन क़ाबिल आहियां जो आउं ॾियण वारो थियो आहियां या आउं हिन क़ाबिल आहियां जो मूंखे अलाह अहिड़ो नवाज़ियो आहे त कंहिंखे कंहिंजी ख़बर कोन्हे तंहिं करे तव्हां तायुन न कयो त केरु अमीर केरु ग़रीब केरु क़ाबिल आहे केरु कोन्हे क़ाबिल तव्हां पंहिंजी नियत सां कयो तव्हां पंहिंजी नियत सां ॾियो उनजो रुझान तव्हां सर हिकिड़ी ॿी बि ॻाल्हि कई हुई त माना उमिरि खां सुठो आहे कंहिंजो पेट भरे छॾियो कंहिंजे घर में कंहिंजो दस्तरखान लॻाराए छॾियो रोज़ जो यानी कि सीधो वठी ॾेई छॾियो उन सां गॾु हिकु न्याणीअ खे पंहिंजे घर ते पहुचाइण यानी उनजी शादी कराइणु निकाह कराइणु जेको मज़हबी कानूनी हिसाब सां न त इहो फिरजट पर हा जेको हीउ दौर पियो हले उन हिसाब सां थोरो घणो ऐं जेको कराइण वारो एॾो अफोर्डेबल आहे त थोरो घणो ख़र्चु करे उनजी शादी थो कराए त इहो बि सवाबु आहे बीमार जी तीमारदारी या उनजी जेको आहे इलाज जो ख़र्चु करणु त वाक़ई सची ॻाल्हि आहे अलाह पाण फरमायो आहे त पहिरीं त उहे कमु कयो बेसिक शयूं कयूं कोन्ह था असां सुनत माना डायरेक्ट नफ़ल फ़र्ज़नि ते था अची वञूं त ईअं कोन्हे नंढी नंढी शयुनि खां शुरू तव्हां थी उते पहुचंदो ऐं उन खां पोइ आउं चवंदसि त जेको दिखावे जी ॻाल्हि कई त जेको ॾिसी था खाऊं या ॾिसी था कयूं त इन्हनि शयुनि खां बसि थोरो परहेज़ कयो असां नात ख़्वां बि वेठल आहिनि माशाल्लाह हीअ आहिनि त नात ख़्वां पर बज़ारि ॾाढा सोशल कम ॾाढा सुठा कंदा आहिनि ऐं ॿियनि जे कमु ईंदा आहिनि दूसरों की काम आना दूसरों के मसले हल करना और रियली मैंने इनको देखा मुझे नहीं अंदाज़ा था वो कहते हैं कभी कभी कहते हैं कि छोटे से पैकेट से बड़ा धमाका वाली बात हो जाती है तो मैं इनके लिए ये अल्फाज कहूँगी मेरी नज़र में इतनी मुझे पता नहीं था क्लियर सी बात है नज़र में क्या मेरी तो नहीं है इतनी औकात कि मैं किसी को कह सकूँ कि मेरी नज़र में मैं ये कहूँगी कि मुझे मालूम नहीं था जब मैं इनसे मिली जब मैंने इनके काम देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत बल्कि खुशी हुई कि ऐसा बंदा जो हर वक्त तैयार रहता है कि किसी को कोई काम हो तो अदी मैं हाजिर हूँ तो और दूसरों के लिए काम भी आना तो ये चीज़ मुझे बड़ी इनकी इंस्पायर की तो आज हमारे पास जो नात ख्वां हमारे बैठे हैं हामिद रज़ा भाई तो उनको मैं कहूँगी कि थोड़ी ना पहले जो है नात का अकीदत नजराना पेश करें और उसके बाद अगर कोई इस मौजू के हवाले से आप कोई बात करना चाहें या उलमा से पूछना चाहें तो प्लीज़ कैरी ऑन आप पूछ सकते का ताज पहने उलमा इकराम मौजूद हैं उनके सामने बोलना हमारे लिए क्या बात है क्या बात उलमा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं बारगाह रिसालत माब में नजरान अकीदत पेश करना चाहता हूँ सुभान इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा जो करम मुझे पे मेरे नबी कर दिया मैं सजाता था सरकार की महफिलें में सजाता था सरकार की महफिलें मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया इस करम का करो शुक्र कैसे अदा इस करम का करो शुक्र कैसे अदा लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता दोस्तों मांगू मैं मौला से क्या दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने हमें क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने
ہمیں اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر جو شہریار داؤد صاحب کے جو اندست ایک چیز میں نے بڑی اس وقت نوٹ کی، اور اتفاق ایسا کہ اسی ہفتے کچھ زیادہ نوٹ کی، کلک ہوئی، اور ماشاءاللہ سے آج جمعہ بھی ہے، لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ وحید مراد صاحب جب فلم کی ریکارڈنگ کرتے تھے کسی کو اندر نہیں آنے دیتے تھے، کہ جب میرا پروگرام دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا ڈرامہ اور یا فلم، تو اس میں وہ ریئلٹی نہیں محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگ دیکھ چکے یہ تو ناٹک کر رہا تھا، یہ تو ایکٹنگ تھی ساری، تو وہ میرا معیار گر جائے گا یا میرے فلم کا معیار گر جائے گا۔ بہت بڑی بات کرنے لگی ہوں سر، ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ایک چاہ ہوتی ہے، ایک آس ہوتی ہے، ہم تڑپتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس قابل کر، دولت بھی ہمیں وہاں نہیں پہنچا سکتی چاہے تو نے کتنی بھی دی ہو، جب تک تو راضی نہ ہو۔ عمرہ بھی تو کروا سکتا ہے، حج بھی تو کروا سکتا ہے، تو زیارتیں بھی تیرے پیاروں کی تو کروا سکتا ہے جب تو چاہے، ادروائز ہم نہیں جا سکتے۔ اس وقت جو جاتا ہے سوری ٹو سے، السلام علیکم ناظرین، میں لائیو جا رہی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ عمرہ ہے، میں عمرہ کر رہی ہوں یہاں، یہ اللہ کا گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حرم میں، دیکھ رہے ہیں مجھے، دیکھیں یہ میرے ساتھ، یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا؟ آپ نے ہماری محبتوں میں، اللہ نہ کرے ہماری تو کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب آپ کی لو اس سے لگ جاتی، لیکن اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ اب یہ سارا کیا ہو رہا ہے، ہو گیا پروفیشنلزم، نمبر 1۔ نمبر 2، اس چیز نے بھی ہمیں بڑا برباد کیا۔ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، ٹھیک ہے نا۔ اول تو ہماری نیکیوں کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، وہ قبول شدہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ جو جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ گیا، اسے ایک روایت میں ہے کہ ایک مقبول یعنی قبول شدہ عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں اس کو 2 قبول شدہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بھائی وہاں جا کر یہ سب کچھ کرنے سے بہتر اپنے ماں باپ کی قبر پہ چلے جاؤ بھائی، کم از کم قبول شدہ تو ملے گا، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نمبر 2 کے لیے جا رہے ہیں نا۔ نمبر 2، آپ کو پتا کووڈ کے بعد پوری دنیا میں ایک انٹرنیشنل فائنینشل سلمپ آیا ہے، گراوٹ آئی ہے، بالکل لوگ اس وقت مقروض ہیں۔ آپ کم از کم مرے سے مرا بھی اس وقت جو ہے نا 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے کم کا عمرہ نہیں ہے۔ اور لوگوں نے، میرے پاس ایک کیس آیا کہ جی ہم لوگوں نے انہی کووڈ کے دنوں میں کہیں سے مجبور ہو کر، ہمیں پتہ ہے سود پر کوئی قرض لینا اللہ سے جنگ ہے، اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری عزتیں نیلام ہو رہی تھیں، ہم بھوکے مر رہے تھے، ہماری کسی نے مدد نہیں کی، مجبور ہو کے ہم نے سود پہ لے لیا، حالانکہ اس کو جائز نہیں سمجھا تھا ہم نے، لیکن لے لیا۔ لیکن وہ سود اب بڑھتا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گیا، ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس کی قسطیں نہیں ادا پا رہے ہیں، ہم کیپٹل بھی نہیں اتار پا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے پاس گئے، یہ میں آپ کو اپنے معاشرے کی بیسی بتا رہا ہوں، ہم لوگوں کے پاس گئے، ہمارے رشتہ دار عمروں پر جا رہے ہیں، پوری 10 افراد کی فیملی جا رہی ہے، 50 لاکھ روپے کا عمرہ کر رہے ہیں، ہمارے 10 لاکھ روپے کسی نے نہیں اتارے، ہمارے 5 لاکھ روپے کسی نے نہیں اتارے،
بتائیں اب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ آپ یقین کرو میرے پاؤں ایسے ہو گئے جیسے من بھر کے میں ہل نہیں سکا ان کے سامنے سے. پھر میں نے ریکویسٹ کی کچھ لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا انہوں نے مدد کی, الحمدللہ ان کا اب سامان بن گیا. آج کے دور میں جو کسی قرض دار کو, یہ میرا اپنا قول بتا رہا ہوں, میں میرا اپنا قول سمجھے میں نے بنا لیا, تم بھائی عمرہ کرنے جاتے ہو, قبول ہو نہ ہو مجھے نہیں پتا, یہ اللہ کی مرضی ہے, لیکن یار تم اپنے دائیں بائیں دیکھو, اپنے معاشرے میں دیکھو, اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, کوئی قرض دار تو نہیں ہے. بچیوں کی شادیوں پہ لوگ بے جا قرضہ لے لیتے ہیں, یار بہتر نہیں ہے. باپ کے مرنے کے بعد تم اتنے کھانے سجاتے ہو, اس کی حیاتی میں اس کو کھانا کھلا دیتے, یہ اتنے فروٹ لگا کے تم نے بچوں کو کھلا رہے ہو, جو قرآن پڑھنے دنیا میں اس کو کھلا دیتے بیچارے کو, تو مرد شاید تھوڑے دن اور زندہ رہ جاتا. مطلب موت تو جب یاد نہیں تھی آ گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مدار 7 سپٹمبر کو گیا تھا, شاہ احمد نورانی صدیقہ کا بھی تھا وہ یوم تحفظ, وہ ناموس رسالت کا جو پاس ہوا تھا بل, میں وہاں گیا, اترتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے تو یہاں پر آ کر یہ دعا مانگی ہے, مجھے میرے بزرگوں نے یہ سکھایا, یا اللہ میں جو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر آیا ہوں اس لیے آیا ہوں کہ ان کے تو درجے بھی بلند فرما, اور اس کے صدقے مجھے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. ہم جاتے ہیں مزار پہ, تعلیم کوئی نہیں, بس دھوم دھڑکا اور یہ وہ سب نہیں, دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ ان کے صدقے مجھے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے, جس کی وجہ آج یہ ولی اللہ ہے. کیا بات ہے سر. علامہ علامہ حیات اللہ عباس نجوی صاحब, इन जो नालो एॾो ॾिठो आहे पर मूंखे वठण में मज़ो बि ॾाढो ईंदो आहे, ॾाढो सुठो बि लॻंदो आहे, ॾाढो प्यारो नालो माशाअल्लाह सां. सो नजवी साहब खे चवंदुसि त अलामा नजवी खे चवंदुसि त तव्हां ओॾी महिल ॻाल्हि पई कई त हिकिड़ो लुट नजवी साहब जी अंदरि खां वई नजफ़ी, त मुंहिंजो उहो ई चयुमि. ठीकु आहे, त तव्हां जेको चयो त माण्हू लुटिजी फुटिजी अची थो वञे, ओॾी महिल खां इहो सुवालु घुमियो पियो, मूं लिखी छॾियो त उहो किथां माना उनखे इज़त उहा ॾियो, हालात जे करे अहिड़े हालत में अची वियो आहे. छा उन माण्हूअ ते अगरि मिसाल उन जी सोच आहे त हिन वञा पियो ऐं मूंखे ज़कात ते ॾियणी आहे, फलाणे खे ॾींदो त विच में लुटिजी वियो, त छा उन ते वाजिबु आहे ज़कात त उहो लुटिजी चुको आहे? अदी जेका हालांकि नियत करे उन खीसे में उहे पैसा आहिनि पर लुटिजी विया आहिनि. जॾहिं हुन वटि माल न आहे त हुन ते ॾियणु वाजिबु कोन्हे को, पर जॾहिं हुन वटि वरी पंहिंजे वतन में पुॼी माल अची वेंदो त उहा साॻे माल अचण खां पोइ उहो ग़रीबनि जो हक़ु हुनखे ॾियणु वाजिबु आहे, उहो फ़र्ज़ु रहंदो. पर जेतिरे ताईं माल कोन्हे को फ़र्ज़ु कोन्हे को. हाणे तव्हांजी ख़िदमत में हिकिड़ो अर्ज़ु कयां त ॾाढो अज़ीम ॻाल्हि आहे इस्लाम जी. इस्लाम चए थो त जेकॾहिं को शख़्स पंहिंजे दौर में अमीर हुयो हाणे ग़रीब थी वियो आहे त उन शख़्स जी ज़िंदगी जो स्टैंडर्ड ॿिया मुसलमान किरण न ॾियनि, हुनखे एतिरी सपोर्ट कनि ताकी हुनजी इज़त नफ़्स पंहिंजे ॿारनि जे साम्हूं पंहिंजे घर वारनि जे साम्हूं ख़राबु न थिए, हुनजो उहो ई लिविंग स्टैंडर्ड रहणु खपे. छाजे करे? ताकी हू मुआशिरे जो हिकु कारमंद फ़र्दु हुयो, हुनखे कारमंद फ़र्दु रहणु खपे ऐं हुनखे नाकारा फ़र्दु न थियणु खपे, ताकी हुनजे दरवाज़े तां जेके माण्हू ईंदा उन्हनि जी उन लिहाज़ सां ई मदद थियणु खपे ऐं हुननि खे मायूसी न थियणु खपे. इस्लाम में इंसान जी इज़त नफ़्स जो एतिरो वक़ार आहे. हुज़ूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत अक़दस में जॾहिं को साइल ईंदो हो त पाण सहाबा इकराम खे ऐं अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे इहो हुकुम कंदा त साइल खे कॾहिं बि झिणक न ॾियो, हुनजी इज़त नफ़्स ख़राबु न कयो, हुनजी इज़त मजरू न कयो. अगरि को जीअं तव्हां सवाल कयो अहिड़ो शख़्स आहे जेको वतन में अमीर आहे त उनखे बिस्तरो अहिड़ो ॾियो जेको हुनजी शान जे मुताबिक़ हुजे. हुज़ूर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साम्हूं जनाब हातम ताई जेको पंहिंजे दौर जो हिकु सखी इंसान हो, अगरचे मुसलमान न हो, इस्लाम जे अचण खां पहिरियां ई हो दुनिया मां हलियो वियो. हुनजी धीअ खे जॾहिं पेश कयो वियो, मुसलमान वठी आया, इस्लाम जो हिकिड़ो कानून हुयो, क़ैदी बणाए करे आया त जे मुसलमान न आहिनि अञा ताईं थिया त जीअं आया त हुज़ूर काइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजी जॻह तां उथिया, उथी करे पंहिंजे कुलनि तां अबा लाथऊं, ज़मीन ते विछायूं ऐं हातम ताई जी धीअ खे चऊं अचु हुन ते वेह. त माण्हुनि चयो या रसूल अल्लाह, हे हातम ताई मुसलमान न हो
तानी धीअ खे एतिरी इज़त छो था ॾियो? फरमायोसि हे पंहिंजे दरवाज़े तां सवाली खे ख़ाली न मोटाईंदो। सखी इंसान हो, हिन सखी इंसान जी न्याणी जी इज़त करणु असां सभिनी जे मथां फर्ज़ आहे। इन रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीम जो इहो असर थियो तो हातम ताई जी पूरी फैमिली मुसलमान थी। हातम ताई जो पुट हज़रत उदय इब्न हातम ताई पोइ मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जेको अज़ीम ऐं जलील क़द्र सहाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। केॾी मतलब यार छा ॻाल्हि जे, अल्लाह जंहिंखे नवाज़े, अल्लाह जंहिं ते अल्लाह जी करम नवाज़ी हुजे। बस थैंक यू सो मच, तव्हां आया। टाइम जी वाकई कचहरी कंदो आहे माण्हू, ॻाल्हियूं ॿुधंदो आहे त वाकई असांखे ॼाण इलाही मिलंदी आहे जेकी हुजण बि खपे। पर उन सां गॾोगॾु तव्हांखे हिकु ॾुख जी ख़बर शेयर कयूं त असांजे स्टेज ऐं टीवी जो हिकिड़ो वॾो नालो, मोतबर नालो, कॉमेडियन, कॉम्पियर जेको आहे सुल्तान शेख साहब, जेके उन्हनि जी कल्ह जेको आहे डेथ थी वई हुई। सो असां उनजे अहले खाना असां उन्हनि जे ॾुख में बराबरि जा शरीक कयूं ऐं उन खां पोइ इहो चवंदासीं त या अल्लाह तूं उन्हनि खे जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमा ऐं क़ब्र जी थधाई रौनक ॾियनि। सो उन सां गॾोगॾु उन्हनि लाइ दुआ जी बि इल्तिजा आहे ऐं थैंक यू सो मच। असांजा नातख़्वा आहिनि पंहिंजो हामिद रज़ा, उन्हनि खे चवंदासीं त वेंदे वेंदे असांखे, छो जो बिल्कुलु टाइम ख़तमु थी चुको आहे त हलंदो रहंदो। करम आज बालाए बाम गया है, करम आज बालाए बाम गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, करम आज बालाए। और मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मुझे मिल गई है दो आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का। और मज़ा जब है सरकार मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है।